ओके, तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कोनिकल पेंडुलम। अब कोनिकल पेंडुलम होता क्या है? कोनिकल पेंडुलम होता क्या है? इट्स अ सिंपल पेंडुलम ओनली, और उसमें जो बॉब होता है दैट इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ। आइए देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टडी व्हाट इज अ सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम, suppose this is a rigid support by means of which there is a thread, a string, through which a heavy mass is considered. A heavy mass is suspended. The center of that mass we consider as a point mass. From that center to the rigid support, the length of the string is considered. So if we consider the length of the string as small l and radius of the bob as r, then the length of the pendulum will be length of the string plus radius of the bob. In the simple pendulum definition, for the string, we consider three properties: that the string is inextensible, it is twistless, and it is massless. But we are talking about conical pendulum. In conical pendulum, the point mass is assumed to be moving in a circular path. So the string will form a cone. So this is called as conical pendulum. That means conical pendulum is not a special pendulum. It is a simple pendulum in which the point mass is considered to move in a circular path. In a circular path. सपोज ये सर्कुलर पाथ का रेडियस है r और इसकी जो हाइट है वो हाइट h, and this is the length of the pendulum L. By using Pythagoras theorem, you can say that L is equal to root of h square plus r. छोटी छोटी बातें पढ़ रहे हैं हम इसमें. There is an angle formed by the string with the vertical height. That angle theta is called as semi vertical angle. Semi vertical angle. You can see we can use trigonometric ratios also. We can apply there, as this is a right angle triangle. So sin theta can be written as opposite upon hypotenuse. तो थीटा का ऑपोजिट साइड क्या होगा? r. हाइपोटेन्यूज क्या है? l. तो sin theta can be written as r upon l.
or you can say R is equal to L sin theta. In similar way, cos theta can be written as adjacent upon hypotenuse. Now, for theta's adjacent side, we have H, hypotenuse is L, therefore the formula becomes H upon L. You can also write as H is equal to L cos theta. Third ratio is tan theta, which is opposite upon adjacent. So the opposite side of the theta is R, adjacent side is H. So we can write as R upon H. Or you can say that R is equal to H tan theta. You see, you can also write as H, R is equal to H. Instead of H, we can write this as L cos theta into what is tan theta? Sin theta upon cos theta. So cos theta get cancelled. That means R is equal to L sin theta. You see, this one is the first relation. Same. So we can interrelate also. Does not. Any doubt? तो ये कॉनिकल पेंडुलम के जो भी हम चीज ढूंढने हैं उसकी छोटी छोटी बातें, बेसिक्स. अब आते हैं हम कॉनिकल पेंडुलम से एक डेरिवेशन निकालेंगे, एक भी बहुत सारे निकाल सकते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम उसके कंपोनेंट का डायग्राम बनाते हैं कॉनिकल पेंडुलम. स्टार्ट करें. नाउ दिस इज आवर रिजिड सपोर्ट. ये वर्टिकल हाइट, सेंटर, सर्कुलर पाथ, रेडियस L, सेमी वर्टिकल एंगल थीटा, हाइट H, बॉब ऑफ मास M. सो यहाँ पे स्ट्रिंग में एक चीज क्रिएट होती है जिसे हम कहते हैं टेंशन T नॉट. सो T नॉट इज टेंशन इन द स्ट्रिंग. अब हम टेंशन इन द स्ट्रिंग को ले रहे हैं तो हम टेंशन के फॉर्मूले निकाल सकते हैं, एक रिलेशन ढूंढ सकते हैं. आइए टेंशन को ढूंढ. तो इस डायग्राम को दोबारा बना रहा हूं. दिस इज एंगल थीटा. यहाँ पे टेंशन है T नॉट. नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है मास mg. ये पार्ट जा रहा है सर्कुलर मोशन में. तो आइए इसे एक्सटेंड कर. So if this is theta, then this is also theta. So theta के T नॉट के दो कंपोनेंट आएंगे. एक वर्टिकल कंपोनेंट आएगा which we can write as T naught cos theta, and the another one is the horizontal component which is T naught sin theta. अब ध्यान से देखें तो बेटा T naught cos theta को बैलेंस कर रहा है mg एंड T naught sin theta सर्कुलर मोशन है ना, तो एक आउटवर्ड पुल आएगा. द फॉर्मूला विल बी mv स्क्वायर अपॉन. सो यहाँ पे हम रिलेट करेंगे mv स्क्वायर अपॉन r इज इक्वल टू व्हाट? T naught sin theta, equation 1. This is also called as radial component. And नीचे कौन है बेटा? mg. That is balanced by vertical component of the tension in the string T naught cos theta. तो ये दो इक्वेशन बन गए. Now suppose if you want to find T naught, तो हमें sin theta और cos theta को एलिमिनेट करना है. To eliminate sin theta and cos theta, we can use identities by squaring and adding. स्क्वायर और ऐड करेंगे बेटा mv स्क्वायर अपॉन r द होल स्क्वायर प्लस mg द होल स्क्वायर
is equal to t naught sin theta का square, that means t naught square sin square theta plus t naught square cos square theta. बेटा दोनों में से क्या कॉमन है? टी नॉट कॉमन आ गया, बचा क्या? साइन स्क्वायर थीटा प्लस व्हाट इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा? 1. सो दैट विल बी इक्वल टू व्हाट? टी नॉट. T naught. यानी हमारे पास टी नॉट का एक रिलेशन बना. सो टी नॉट इज इक्वल टू व्हाट? एम वी स्क्वायर अपॉन आर द होल स्क्वायर, सॉरी दिस इज ऑल्सो टी नॉट स्क्वायर प्लस एम जी द होल, therefore t naught is equal to square root of mv square upon r the whole square plus mg the whole square. कोई इश्यू? कॉपी करना है आपने? तो सपोज हमने जो दो इक्वेशन लिए हैं कॉनिकल पेंडुलम के, वो क्या है एक बार देख लेते हैं दो बार. दैट इज व्हाट? टी नॉट साइन थीटा is equal to mv square upon r and t naught cos theta is equal to mg. ठीक है बेटा. अब सपोज हमें थीटा ढूंढना है टू फाइंड सेमी वर्टिकल एंगल. टू फाइंड सेमी वर्टिकल एंगल दोनों को डिवाइड कर दो, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2. सो 2 इज डिवाइडेड बाय 1 तो क्या मिलेगा? सॉरी 1 इज डिवाइडेड बाय, सो टी नॉट साइन थीटा डिवाइडेड बाय टी नॉट cos थीटा, दिस इज इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन r डिवाइडेड बाय mg. सो टी नॉट और टी नॉट कैंसिल हो गया, mg और mg कैंसिल हो गया. So we have sin theta upon cos theta is nothing but what? Tan Tan theta. theta, which is equal to v square upon r. So this is also one of the relation for tan theta. अब ध्यान से देखो बेटा, theta can be written as tan inverse of v square upon. Now if I consider this relation also, so I can find velocity, linear velocity of the ball. देखो बेटा v square, as we know that tan theta is equal to v square upon rg. Therefore v square is equal to rg tan theta. Therefore v is equal to square root of rg tan. Same formula, banking of road when a vehicle is taking a turn. Now suppose the person says find the relation of the angular velocity. Find the relation of the angular velocity. So relation of the angular velocity means we all know that v is equal to r omega. So instead of v we can write r omega is equal to root of rg tan theta. Therefore omega is equal to root of rg tan theta divided by r. अब r रूट में जाएगा तो क्या आएगा? ओमेगा इज इक्वल टू रूट ऑफ rg tan theta अपॉन r स्क्वायर. क्या कैंसिल हुआ? r and square get cancel. We have a formula omega is equal to root of g tan theta upon r. r और square cancel.
So this is the formula for angular velocity. Now suppose वो कहते हैं find the relation of the time period t. For time period of the bob in conical pendulum suppose it is denoted by t. So we know that omega is equal to 2 pi by t. If omega is equal to 2 pi by t, then t is equal to 2 pi by omega. And omega का relation अभी हमने ढूंढा. Since we know that omega is equal to root of g tan theta upon r, so we can substitute this. We get therefore t is equal to 2 pi root of g tan theta upon r. Therefore t is equal to 2 pi root of r upon g. अब जहां जहां tan theta आया है, we can use the trigonometric relation. अब trigonometric relation हमने 2 मिनट पहले लिखे थे. Since we know that tan theta was at r upon h. In a conical pendulum, this is r, this is h, this is theta, and this is l. So tan theta was r upon h. So substitute करने पे हमें time period t का formula मिलेगा 2 pi root of r g tan theta is equal to r upon h जो है वो ऊपर चला जाएगा. तो r get cancel. We have t is equal to 2 pi root of h upon g. Now I think you remember that अगर इसमें हम cos theta use करें, so cos theta will be adjacent side h upon hypotenuse l. Therefore h can be written as l cos theta. अगर मैं h की जगह पे यहाँ डाल दूं तो t का एक और फॉर्मूला बन गया 2 pi root of l cos theta by g. So we can find n number of relations. Now suppose if the person says we have to find the frequency of revolution. So since we know that frequency is 1 upon t, therefore n can be equal to 1 upon t. मतलब इसका पूरा उल्टा. So 2 pi will become 1 upon 2 pi root of g ऊपर जाएगा and l cos theta नीचे आ जाएगा. तो ऐसे जितने फॉर्मूले चाहिए उतने बना सकते, ऐसा कुछ. हम टेंशन टी नॉट को भी सॉल्व कर सकते हैं आगे. फिलहाल अगर आपको कॉपी करना है तो आप कॉपी कर सकते हैं. आई एम गिविंग यू 2 minutes to copy. अब यहाँ पे देखो बेटा. सो टेंशन टी नॉट का फॉर्मूला रूट ऑफ एम वी स्क्वायर अपॉन आर द होल स्क्वायर प्लस एम जी, जो हमने इनिशियल स्टेज में हमने स्टडी किया था बाय स्क्वायरिंग एंड एडिंग द टू इक्वेशंस. जैसे टू इक्वेशंस क्या थे हमारे पास, टी नॉट साइन थीटा which was mv square upon r and t naught cos theta that was mg. और हमने इसको क्या किया था, स्क्वायरिंग एंड एडिंग किया था, जिसमें टी नॉट स्क्वायर कॉमन आ गया था
बाकी बचा था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे हमारे 2 स्क्वायर आ गए थे जो ये है mv स्क्वायर अपॉन r और mg। इसकी वैल्यू क्या होगी थी 1। therefore t naught was equal to mv square upon r the whole square plus mg, और ये आ गया था, यही था ना। अब आगे चलते हैं बेटा, ध्यान से देख। टी नॉट इज इक्वल टू, दोनों में से कॉमन क्या बेटा, एम स्क्वायर, बचेगा क्या वी स्क्वायर अपॉन आर द होल स्क्वायर, प्लस क्या इधर आएगा एम स्क्वायर जी स्क्वायर। टी नॉट इज इक्वल टू बेटा एम स्क्वायर कॉमन आगे बाहर आ गया एम, वी स्क्वायर अपॉन आर प्लस जी स्क्वायर। बेटा अभी हम लोगों ने एक रिलेशन निकाला था, वी स्क्वायर अपॉन आर जी वॉज इक्वल टू टेन थीटा, याद आया कुछ? वी स्क्वायर अपॉन आर जी इज इक्वल टू टेन थीटा, देखो याद आया? हाँ मिला सर। नहीं मिला? हाँ 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 सर। हाँ, मिला सर, मिला। तो वी स्क्वायर अपॉन आर क्या आएगा, जी टेन थीटा। हाँ हाँ। तो ये यहाँ पे डालेंगे तो दैट विल बी जी टेन थीटा। therefore t नॉट इज इक्वल टू m। बेटा दोनों में से कॉमन क्या है, जी। जी स्क्वायर, जी क्या स्क्वायर, कॉमन यस। आएगा, जी जी स्क्वायर स्क्वायर। कॉमन आएगा। अगर जी स्क्वायर बाहर आएगा तो जी हो जाएगा, रूट में क्या बचेगा, टेन स्क्वायर थीटा टेन स्क्वायर थीटा प्लस वन, फॉर्मूला बन प्लस गया। वन। टेन थीटा की वैल्यू हमने अभी निकाली थी आर अपॉन एच, है ना। टेन हम्म। थीटा का फॉर्मूला था आर अपॉन एच, वैल्यू डाल सकते हैं। सो टी नॉट इज इक्वल टू एम जी रूट में आर अपॉन एच द आर होल स्क्वायर होल प्लस वन। स्क्वायर प्लस और वन। कुछ कर सकते हो बेटा, सर वन लेस प्लस देन टेन 1 स्क्वायर मिनट थीटा, रिमेनिंग दिखा रहा है। कोई बात नहीं। वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज व्हाट, सेक स्क्वायर थीटा। तो टी नॉट विल बी इक्वल टू एम जी, व्हाट इज सेक्स स्क्वायर थीटा, बाहर आके क्या आएगा, सेक थीटा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। यस सर। तो टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी द स्पेशल केस फॉर वर्टिकल सर्कुलर मोशन। अब ये स्पेशल केस है क्या, वर्टिकल सर्कुलर मोशन का स्पेशल केस क्या है? द स्पेशल केस इज टेंशन एट द लोएस्ट पॉइंट माइनस टेंशन एट द हाईएस्ट पॉइंट इज इक्वल टू 6 mg। तो ये हमारे पास स्पेशल केस है। अब ये प्रूव करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं बेटा, प्रूव। स्टार्ट करें। यस सर। तो मुझे बताइए टेंशन एट लोएस्ट पॉइंट का फॉर्मूला क्या बेटा, टेंशन एट लोएस्ट पॉइंट इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर एम वी अपॉन स्क्वायर आर अपॉन आर प्लस एम जी। प्लस एम जी। वेरी गुड। सो दिस इज फर्स्ट, एंड टेंशन एट हाईएस्ट पॉइंट विल बी एम वी mv स्क्वायर अपॉन square आर upon r square माइनस एम जी। minus mg. what we required is a difference in the tension at the lowest and the highest. So we have to subtract these two. We get tension at lowest minus tension at highest is equal to, दोनों में से क्या कॉमन है बेटा, व्हाट इज कॉमन, m अपॉन r। बचेगा क्या, वेलोसिटी एट लोएस्ट पॉइंट स्क्वायर माइनस वेलोसिटी एट हाईएस्ट पॉइंट स्क्वायर। ये नेगेटिव का पॉजिटिव हो जाएगा, तो दिस विल बी mg प्लस mg becomes 2 mg. 2 एम जी। 2m. Now there are two ways to solve this. One is applying the formula directly. One is finding this value. Suppose if we apply the formula directly, we know that velocity at lowest point is square root of pi rg, Fire. and velocity at highest point is equal to square root of rg. So if we substitute here, tension at lowest point minus tension at highest point is equal to m upon r. So this is square root of pi rg the whole square minus square root of 3rg, no sorry, rg the whole plus
2 mg. Therefore, tension at lowest point minus tension at highest point is 1 upon m upon r. रूट कैंसिल हो गया बेटा, क्या मिला? पाई आर जी माइनस आर जी प्लस 2 mg. So this is m upon r. What is 5 minus 1? 4 rg plus 2 mg. कुछ कैंसिल हो रहा है बेटा? M. r और r कैंसिल. So we have 4 mg plus 2 mg. That is nothing but 6 mg. In simple words, you can say that tension at lowest point minus tension at highest point is equal to 6 mg. 6 mg. Any doubt? When a car is moving through an overhead ब्रिज, तो ये ओवरहेड ब्रिज है, यहां से कार पास हो रही है. अभी इस कार की अपनी एक वेलोसिटी है v, इसके बीच में यहाँ पे जो रेडियस आएगा वो आएगा r. ये रेडियस कभी भी सेंटर ऑफ द कार से लिया जाता है. टोटल रेडियस विल बी सेंटर ऑफ द कार. ये जो कार का सेंटर सरफेस से कितनी हाइट पे है h और कर्वेचर का रेडियस है कैपिटल R, तो एक्चुअल कर्व का रेडियस जो होगा वो होगा r प्लस H plus R. h प्लस r. ये ध्यान में रखना बेटा, ये गुगली होती है, कई बार खेल लेते. नाउ यू सी, अगर ये ऐसे जा रहा है तो ये एक वर्टिकल सर्कुलर मोशन का टॉप व्यू हो गया. और वर्टिकल सर्कुलर मोशन का अगर टॉप व्यू है तो इस टॉप पे उसकी वेलोसिटी कितनी होगी ताकि वो जमीन ना छोड़े. सो द वेट वाज बैलेंस्ड बाय द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. तो जो कार के नीचे की तरफ जो फोर्स है वो है वेट मास इनटू ग्रेविटी, और ऊपर की तरफ जो फोर्स आ रहा है वो है mv² अपॉन r. सो इक्विलिब्रियम के हिसाब से, इफ द कार इज इन इक्विलिब्रियम मतलब ऑन द सरफेस, तो यू कैन से दैट mv² अपॉन r इज इक्वल टू mg. क्या कैंसिल हो रहा है बेटा? m और m कैंसिल, v² इज इक्वल टू rg, और यू कैन से देयरफॉर v इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ rg. देखिए ये फॉर्मूला कौन सा है? दिस इज सिमिलर टू Highest point. yes velocity at the Velocity at highest highest point is point. square root of r. So indirectly overhead bridge जो है, that is a concept of what? Vertical circular Circular motion. लॉजिक समझ में है? कोई इशू? No, sir. अब आगे चल, तो स्फीयर ऑफ डेप्थ को स्टडी करते हैं. यस, तो स्फीयर ऑफ डेप्थ क्या होता है बेटा? ऐसे एक गोल सा होता है, स्फीयर होता है गोला, और उसमें एक बाइकर होता है और वो स्टंट दिखाता है. कभी देखा है आपने? एक बाइकर स्टंट दिखा रहा है और ऐसे गोल 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 घूमता है. तो ये गोल घूम पाए तो उसे नीचे से एक वेलोसिटी चाहिए ना, कि एक स्पीड से जाएगा तभी वो गोल घूम पाएगा. तो नीचे उसके पास कौन सी वेलोसिटी होगी ताकि वो गोल घूम पाए? तो ये भी एक किस्म का कौन सा मोशन है? दिस इज ऑल्सो सिमिलर टू व्हाट? वर्टिकल सर्कुलर मोशन. सो Circular इस motion. पॉइंट पे, यानी दिस इज विच पॉइंट? लोएस्ट पॉइंट पे इसका फॉर्मूला सेम आएगा, वेलोसिटी एट लोएस्ट पॉइंट, दैट इज रूट ऑफ पाई आर जी. और अगर ये RG. बाइकर एकदम ऊपर होगा तो इस पॉइंट पे उसकी जो वेलोसिटी आएगी, that velocity will be equal to at the highest point, which is Root RG. which will be root of
RG। समझ आया बेटा? तो कभी अगर ये भी एक एग्जांपल आ जाए स्फीयर ऑफ डेथ, तो टेंशन मत लो, ये वर्ड वेलोसिटी एट लोएस्ट पॉइंट √5 rg और वेलोसिटी एट हाईएस्ट पॉइंट √rg, सेम फॉर्मूला ही लगेगा, कोई बड़ी बात, लिख लो बेटा। Let us start. First of all, suppose if we have a particle, P is a particle of mass m, and this particle P moves along a straight line from position A to position B. So this motion along a straight line is called as linear motion. Similarly, if we have a particle P at position A of mass m, which is at a fixed distance r from point O, and if this particle moves such that the distance r does not changes, so this particle will move in a circular path. This is called as circular motion. So when a particle moves along a straight line, it is called as linear motion. When a particle moves along a curved path, then it is called as circular motion. Similarly, if a group of particles this is a group of particles which moves along a straight line from position A to position B, then it is called as translational motion. This group of particles is called as system of particles. So when a system of particles moves along a straight line, the motion is called as translational motion. Now, if I consider this system of particle, and these particles are moving along the circular path, then when a system of particles move along the system of particle moves such that actually all the particles are in a circular motion. When a system moves such that all the particles are in a circular motion. When a system of particle moves such that all the particles move in circular motion, we say system is in rotational motion. इसे दोबारा पढ़ते, linear motion, angular motion. If we talk about displacement, we talk about, so displacement को सिंपलाइज करते हैं s से, कई बार x से,
कई बार डी से, और यहाँ पे हमारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आएगा थीटा। वेलोसिटी, वेलोसिटी को डिनोट करते हैं वी से, जिसका मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, जिसका मतलब होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यानी थीटा अपॉन टी। ये होगा मीटर पर सेकेंड, और एंगल मेजर होता है रेडियंस में, इसलिए ये होगा रेडियंस पर सेकेंड। थर्ड चीज हमारे पास आती है वो है एक्सेलरेशन, यानी किस हिसाब से स्पीड बदली। सो एक्सेलरेशन को डिनोट करते हैं ए से, विच इज चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी वेलोसिटी चेंज हुई विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। और यहाँ आता है अल्फा, यानी चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। एक्सेलरेशन को हम लिख सकते थे फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम, और अल्फा को रिप्रेजेंट कर रहे थे फाइनल वेलोसिटी ओमेगा 2 माइनस इनिशियल वेलोसिटी ओमेगा 1 अपॉन टाइम। तो ये तो बेसिक्स था जो हमने पढ़ा। अब हमारे पास एक फिजिकल क्वांटिटी आती है जिसे कहते हैं मास। बहुत इंटरेस्टिंग है मास। तो व्हाट इज एक्चुअली मास? तो मास को स्टडी करते हैं बेटा। सपोज दिस इज अ ब्लॉक ऑफ 10 केजी, मुझे इसे मूव करना, सो आई हैव टू अप्लाई अ फोर्स। मैंने फोर्स अप्लाई किया F1। नाउ आई हैव अनदर ब्लॉक 10 केजी, और इसके ऊपर एक और है 10 केजी, तो कितना केजी हो गया? 20 केजी। आई हैव टू अप्लाई फोर्स F2। व्हाट कैन यू से अबाउट द रिलेशन ऑफ F1 एंड F2? कौन बड़ा कौन छोटा? बट नेचुरल F2 विल बी ग्रेटर देन F1, यानी मुझे क्या अप्लाई ज्यादा करना पड़ गया? फोर्स, यानी मोर फोर्स इज अप्लाइड, मोर फोर्स इज रिक्वायर्ड इफ मास इंक्रीजेस। तो मेरी तकलीफ बढ़ गई कि घट गई? तकलीफ मतलब क्या? कष्ट। इफ मास इंक्रीजेस तो तकलीफ भी बढ़ी। तो मास बढ़ेगा तो कष्ट भी बढ़ेगा, तकलीफ भी बढ़ेगी। प्रॉपर है? यानी मास जो है वो कष्ट है, तकलीफ कोई इशू। अब आगे चलते हैं, ये कष्ट का मतलब क्या? टेक्निकली ये कष्ट का मतलब क्या आएगा? ध्यान से देखो बेटा। तो सपोज ये एक गाड़ी है, दिस इज एट रेस्ट, तो मुझे इसे मूव करना है। आई हैव टू अप्लाई फोर्स, आई हैव टू परफॉर्म व्हाट? वर्क। तो मुझे फोर्स अप्लाई करना है। अब फोर्स क्यों अप्लाई करना है? क्योंकि ये गाड़ी अपने मास के हिसाब से, जितना मास बढ़ेगा उतना हमारी तकलीफ बढ़ा देगा, यानी ये मूव होना नहीं देगा। इट इज एट रेस्ट and this person, Mr. Anil, wants to move this. So what does Anil want to do? Anil want to move the car, whereas car is at, तो ये स्टेट, कार इज एट रेस्ट, तो ये स्टेट है रेस्ट का और वो मूव करना चाहता है। दैट मीन्स अनिल वांट्स टू चेंज द स्टेट ऑफ बॉडी, यानी बॉडी एट रेस्ट है कि मोशन है, वो चेंज करना चाहता है। इफ मास इंक्रीजेस, अगर मास इंक्रीज हो जाएगा तो ए का चेंज करने की ताकत भी, यानी फोर्स भी ज्यादा लगेगा। फोर्स ज्यादा लग गया मतलब मेरा कष्ट बढ़ गया।
कस्ट बढ़ गया मतलब ये चेंज नहीं होगा, यानी कि इनएबिलिटी टू चेंज इंक्रीजेस, चेंज नहीं होने देगा। अगर मास बढ़ेगा तो चेंज नहीं होगा। अगर मैं इसके ऊपर और वेट बढ़ा दूंगा तो मुझे और ज्यादा धक्का लगेगा, और ज्यादा कष्ट लगेगा, और इसकी इनएबिलिटी टू चेंज बढ़ जाएगी, यानी ये रुकने की पूरी कोशिश करेगा। व्हाट डू यू मीन बाय इनएबिलिटी टू चेंज? inertia, यस, वेरी गुड। यानी मास बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा? इनर्शिया बढ़ेगा। इसका मतलब जो मास हम बात करते हैं वो एक्चुअली इनर्शिया। नहीं जा रहा हूं। मोमेंट। नाउ सपोज there is a fixed point O, अभी और भी आ रहे हैं बेटा सब। मोमेंट। Now suppose there is a fixed point O and a fixed distance R. There is a particle P whose mass is M. Whose mass is M. Then R into M. This is called as moment of mass. R into M is called as moment of mass. Now, suppose if we have a point O at a distance R, there is a particle P whose mass is M and moving with a velocity V. So what is mass into velocity? This is denoted by P, and that is called as linear momentum. So there is a linear momentum P. इसका मतलब point O at a distance R, there is a particle of mass M with linear momentum P. So R into P will be called as moment of momentum. Which momentum? Linear moment. तो मोमेंटम का मोमेंट का मतलब होता है R into that physical quantity. That means from a point O at a distance R, there is a particle P with some physical quantity PQ. Then R into PQ will be called as moment of PQ. So anything multiplied by R will become moment. For an example, अब आपको याद आएगा कि आपने जिंदगी में कभी कुछ सुना था ऐसा। From a point O at a distance R, there is a point P on which we are applying some force F. So R into F is called as moment of force. सुना था कभी? Yes, 11th standard, moment of force, and this moment of force was responsible for rotational motion. That means every physical quantity which deals with linear motion, physical quantity deals with linear motion, its momentum, its moment deals with rotational motion.
and this moment of force was given one word, that is nothing but torque denoted by tau. याद आया कुछ? हाँ. That means if R increases, moment of any physical quantity also increases. If moment increases, that implies ability to rotate also increases. Ability to rotate also increases. तो यहाँ पे मास m मास जो है लीनियर मोशन में आ रहा है, तो मूवमेंट ऑफ मास एंगुलर मोशन में आएगा और मूवमेंट ऑफ मास मतलब r इंटू एम एंगुलर मोशन में आएगा. अब मास किसको रिप्रेजेंट करता है? हमने अभी पढ़ा था मास एज अ इनर्शिया, तो मूवमेंट एज अ इनर्शिया बन गया. सो इनर्शिया हियर बिकम्स अ फिजिकल क्वांटिटी. नाउ इफ वी कंसीडर एनी पॉइंट O एट अ डिस्टेंस r, एक पॉइंट है P, उसका इनर्शिया है I. So R into I will become moment of inertia. Moment of inertia. कोई डाउट? अब अगर आप ध्यान से देखें, so you can say that moment of inertia, जिसे हम mi से डिनोट करेंगे, can be represented as R into I, which is R into I is what? Moment of mass. I is what? Moment of mass. और moment of mass की वैल्यू क्या बेटा? R into M. So R into M becomes what? mr square. In simple words, you can say moment of inertia is equal to mr. Square. तो लीनियर मोशन में जो मास काम करता है, एंगुलर मोशन के अंदर वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया काम करता है. सो वेयर वी यूज मास, दैट मींस मास प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल. In angular motion, moment of inertia plays an important. Mass plays an important role in linear motion. Mass plays an important role in linear motion. मास का काम मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्ले करता है, प्लेज दैट रोल इन एंगुलर मोशन. यानी मास जो लीनियर मोशन में रोल प्ले करता है, वो रोल मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंगुलर में करता है. सो इफ वी टॉक अबाउट, सपोज हमारे पास फोर्स है, फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन इन लीनियर मोशन. तो एंगुलर में उसका मोमेंट आता है, मोमेंट ऑफ फोर्स, जिसको हम क्या कहते हैं? टॉर्क. तो मास की जगह पे आएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई, और एक्सेलरेशन की जगह पे आएगा अल्फा. एक्सेलरेशन की जगह पे क्या आएगा? अल्फा. Alpha. जैसे एग्जांपल एक और लेते हैं, काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल इज हाफ mv स्क्वायर इन लीनियर. तो काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल में आएगा हाफ m की जगह पे क्या आएगा? I, and instead of v we will have omega square in angle. एक और एग्जांपल ले लेते हैं, मोमेंटम.
mass into velocity in linear. तो angular momentum is denoted by L. M की जगह पे आएगा I और V की जगह पे आएगा ओमेगा Omega. इन एंगुलर. समझ आया बेटा? तो जहां जहां मास आएगा वहां वहां मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा. तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए थोड़ी सी और स्टडी. मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंगुलर से रिलेटेड है और एंगुलर की एबिलिटी बताता है टॉर्क. टॉर्क इज मोमेंट ऑफ फोर्स. इसका मतलब टॉर्क जिसे टाउ से डिनोट करते हैं, मोमेंट ऑफ फोर्स मतलब आर इंटू एफ आएगा. और टॉर्क इज आई इंटू अल्फा ऑल्सो. अभी लिखा है मैंने, प्रीवियस अभी देखा. So torque is R into F and torque is equal to I into alpha. That means both are equal. So we can write I alpha is equal to RF. Any doubt? Therefore, I alpha is equal to RF. Force is what, beta? Mass into Acceleration. acceleration. For I alpha is equal to M into R into acceleration. अब बेटा acceleration का एक relation है, शायद आपको याद हो, linear और angular का. A is equal to R alpha. 11th standard. A is equal to R alpha. So where we have to write R alpha. Therefore I alpha is equal to M R square alpha. कुछ cancel हो रहा है बेटा? Alpha. Alpha Alpha. cancels. So we have I is equal to M R MR square. square. Any doubt? तो ये फॉर्मूला पहले मैंने आपको थियोरेटिकल बताया, अब मैंने आपको मैथमेटिकली प्रूव कर दिया. Of a body, movement of inertia of a body. बॉडी का शेप कुछ भी हो, कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं. तो हम वो ढूंढ रहे हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी. तो सबसे पहले हम उसका डायग्राम पढ़ लेंगे. Suppose if I consider a rigid body of any shape with negligible thickness, with negligible thickness, इस बॉडी का मास है m. m is the mass of the body. We are considering one particle of mass m1. This is another particle of mass m2. This is another particle of mass m3. Dot dot dot. We have n number of particles with mass mn. So m1, m2, m3, mn. Dot 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 dot. mn be the masses of the particles. अब हम इसे रोटेट कराना चाहेंगे, तो इसे रोटेट कर रहे हैं हम एक एक्सेस से इन एन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है आई. क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया है? आई. तो आई इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी. जब हम इसे घुमाएंगे, रोटेट करेंगे, तो ये पार्टिकल ऐसे गोल गोल सर्कुलर मोशन में घूमेगा. So if this particle will move in a circular motion, it will have some radius. Suppose that will be r1. So r1 is the perpendicular distance of the particle of mass m1 from the axis of rotation. Similarly, particle 2 will rotate with its radius r2. Particle 3 will rotate with its radius, or you can say perpendicular distance r3. Similarly, particle n will rotate with the perpendicular distance rn. So we have
R1, R2, R3 dot Rn be the perpendicular distance of the particles from the axis of rotation, from the axis of rotation. अब ये जो पार्टिकल है उसका इनर्शिया है I1, this particle has an inertia I2, this particle has an inertia I3, this particle has an inertia In. तो बेटा I का फॉर्मूला क्या है हमारे पास? मोमेंट ऑफ इनर्शिया I का फॉर्मूला, मोमेंट ऑफ इनर्शिया I फॉर्मूला I is equal to mr square. So I1 will be equal to m1 r1 square. I2 can be written as m2 r2 square. I3 can be written as m3 r3 square. Dot In will be equal to mn rn square. तो अगर मुझे टोटल इनर्शिया चाहिए सारे पार्टिकल्स का तो मुझे इन सबको ऐड करना पड़ेगा. तो ऐड करते वक्त मुझे क्या मिलेगा? I will be equal to I1 plus I2 plus dot In. So this will be m1 r1 square plus m2 r2 square plus dot plus mn rn square. So this can be written as mathematically as summation of mi ri square, where I starts from 1 to n, and this becomes the formula for moment of inertia of the body. Moment of inertia of the. अब जो हम करने जा रहे हैं, that is kinetic energy of a rotating body. The diagram is similar to the moment of inertia. Only thing what we represent in the diagram is the velocity. So diagram बनाते हैं. Thickness is negligible. We have an axis of rotation passing through any point O, suppose. Axis is perpendicular to the plane, rotating anti-clockwise with a moment of inertia I. Let m1, m2, m3 dot mn be the masses of the particles which are at a distance of r1, r2, r3 dot rn from the axis of rotation, moving with a linear velocity v1, moving with a linear velocity v2, moving with a linear velocity v3, moving with a linear velocity vn, and so on respectively. Dialogue आएगा, समझ आया बेटा? m1, m2 dot mn be the masses, r1, r2 dot rn be the distance, perpendicular distance from the axis of rotation, with v1, v2, v3 dot vn be the linear velocity. This is masses. This is perpendicular distance from axis of rotation, and this is linear velocity. So beta, we all know that v is equal to r omega. V is equal to r omega, and kinetic energy has a formula as half mv square. So if we substitute instead of v, we substitute r omega, so it becomes half m r omega the whole square. So we can write kinetic energy as a formula half m r square omega. For individual particles, if we write kinetic energy of a rotating body of a particle E1, so that can be half m1 r1 square omega square. E2 will be equal to half m2 r2 square omega square. Dot En will be equal to half mn rn square omega square. You can see here each particle has mass m1, has a distance r1 r2, but the angular velocity is omega only.
That means omega is constant. That means the particle is moving with a constant angular velocity. If the angular velocity is constant, then angular acceleration will be what? Zero. Velocity constant है तो speed नहीं बढ़ रही. Any doubt, beta? No, sir. Now, if you want to find the total rotational energy of the body, then total energy will be equal to E1 plus E2 plus dot 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 En. You can see what is common from all the part. It is half, and also what is common, omega square. So what remains? M1 R1 square plus M2 R2 square plus dot 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 dot. It becomes Mn Rn square. So this can be written as half of, this is summation of Mi Ri square, where I starts from 1 to n, into omega square. What is this value? What is this value? This value is what? This value is moment of inertia I. So instead of this, we can write this as a kinetic energy of a rotating body is half of I. Finding derivation for torque of a rotating body. Derivation for the torque of the Rotating body. rotating body. तो सबसे पहले डायग्राम बनाते हैं. सेम स्टोरी. A rigid body of any shape with a negligible thickness, axis of rotation passing through any point O. Same dialogue with rotating anti-clockwise direction with moment of inertia I. Let M1, M2, M3 be the particles. Dot 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 Mn at the distance of R1, R2, R3 dot 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 Rn from the axis of rotation. Now this is rotating, this is rotating, rotating, rotating. अगर बेटा टॉर्क है तो we are applying a force ना, तो tangential force will be F is tangential force and tangential. So M1, M2, M3 dot 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 Mn be the masses of the particles Particle. at a distance R1, R2, R3 dot 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 Rn from the axis of rotation. समझ आ रहा है बेटा? From the axis of हाँ सर. rotation. Rotation. अब इसका जो एक्सेलरेशन है वो है अल्फा. ठीक है? Axis of rotation rotating with constant angular acceleration alpha. Constant angular acceleration alpha. Alpha. Torque is moment of force. Torque is moment of force. मतलब R into F. एक्चुअली इसमें होता है क्रॉस प्रोडक्ट. क्या होता है? क्रॉस प्रोडक्ट. टॉर्क इज R क्रॉस F. सो टॉर्क इज इक्वल टू, मुझे बताइए बेटा, व्हाट इज A क्रॉस B? दैट इज AB sin theta. So R cross F will be equal to RF sin theta, where theta is the angle between
R and F. Theta is the angle between R and F. अब बेटा R ये है, F ये है, तो इन दोनों के बीच में R और F के बीच में एंगल कितना है बेटा? 90 degree. 90. 90 degree. Yes, very good beta. And theta is equal to what? 90 degree. Therefore, torque is equal to R into F into sin 90. बेटा sin 90 की वैल्यू कितनी होती है? 1. 1. Yes, very good. Therefore, torque is equal to R into F. F. If torque is equal to R into F, then the second part of the derivation is torque is equal to R into F is mass into acceleration. Mass into. Very good, beta. Therefore, torque is equal to R into M into A, acceleration. Therefore, torque is equal to M into R. Acceleration का formula R alpha. Acceleration is equal to R alpha. Therefore, torque is equal to M R square alpha. Any doubt, बेटा? No, sir. No, sir. अब ये स्टोरी वापस चालू हो जाएगी. Therefore, torque 1, that means torque of the particle 1 will be equal to M1 R1 square alpha. Torque 2 will be equal to M2 R. M2 R2 square alpha. सब लोग बोलो torque 3 is equal to M3 R3 square alpha. alpha. Dot torque n is equal to Mn Rn square alpha. Now the total torque will be equal to tau, which is equal to tau 1 plus tau 2 plus tau 3 plus dot. That will be equal to tau n. So this will be equal to M1 R1 square alpha plus M2 R2 square alpha plus dot Mn Rn square alpha. What is common? Alpha. Very good, beta. So what remains? M1 R1 square plus M2 R2 square plus dot Mn Rn square. So this can be written as summation of Mi Ri square, where I starts from 1 to N. alpha. And this is what? I. That's why that torque can be written as I alpha. याद है स्टार्टिंग में मैंने एक टेबल बनाया था, उस टेबल में मैंने आपको समझाया था. तो टॉर्क रिप्लेस हो रहा है F की जगह पे. F का फॉर्मूला था मास इनटू एक्सेलरेशन. टॉर्क की जगह फोर्स की जगह पे टॉर्क आया, मास की जगह पे I आया, A की जगह पे अल्फा आया. याद आया? हाँ. Any doubt? No. So moment of inertia of a particle is mr square, and moment of inertia of system of particle is summation of m into r square mi ri square, where I starts from 1 to n. हमने ये लास्ट लेक्चर पढ़ा. अब सपोज इफ आई हैव few particles, it has mass m and m separated by a distance a. And I have to find the moment of inertia about the axis passing through one of the masses. तो suppose ये हमारे पास mass 1 है and this is mass 2, m2 is equal to m. So perpendicular distance of mass 1 from the axis of rotation is r1, which is actually 0, क्योंकि particle is at on the axis. And the perpendicular distance from the particle 2 from the axis of rotation is r2, which is actually equal to what? A. So
moment of inertia I, it has the formula summation of mi ri square. I starts from 1 to n. So therefore I will be equal to, we have two masses, m1 r1 square plus m2 r2 square. M1 value is nothing but m, r1 value is 0 square, m2 value is m, r2 value is also a the whole square. So this becomes 0 plus ma square and the value becomes ma square. Any doubt? Now suppose I have two masses, mass m1 as m, mass m2 as m, which are at a distance of a from each other. Now the axis of rotation is at the center of the two bodies. So I have to find the moment of inertia I. Solution. So m1 is equal to m, m2 is equal to m, r1 will be, if the entire length is a and this is the midpoint, so this length will be equal to a by 2 and this length will be also equal to a by 2. So we have r1 is equal to a by 2 and r2 is also equal to a by 2. So the moment of inertia I will be equal to summation of mi ri square. I starts from 1 to n, that can be represented as m1 r1 square plus m2 r2 square. So that value of m1 is what? M. R1 is a by 2 the whole square plus m into R2 is a by 2 the whole square. So this becomes twice of m. A square by 2 ka square ho gaya 4. So the value becomes half ma square. Any doubt? Now suppose I have four masses. With mass m, m1 as m, m2 as m, m3 as m, m4 as m, and they are at a distance of a from each other. You can say forming a square. Now the axis of rotation is passing through m1 and m2. So the moment of inertia will be so m1 is equal to m2 is equal to m3 is equal to m4 is equal to m. R1. R is the distance. R1 is the distance of the mass m1 from the axis of rotation. So beta mass m1 is lies on the axis of rotation. So R1 will be equal to what? 0. R2 is the distance of the particle from the axis of rotation. So m2 का जो mass है वो एक्सेस पे ही है तो उसका r की वैल्यू क्या आएगी 0. R3 will be equal to the distance of the mass 3 from the axis of rotation. यहाँ से perpendicular distance कितना है बेटा a. So this will be a and R4 will be equal to a. So therefore moment of inertia का formula m1 r1 square plus m2 r2 square plus m3 r3 square plus m4 r4 square. So we have m1 is m, r1 is 0, m2 is m, r2 is 0, m3 is m, r3 is a, and m4 is m, r4 is a. So this becomes 0 plus 0 plus ma plus ma. So that becomes nothing but 2 ma. The square. Yes. तो यहाँ स्क्वायर आएगा तो 2 ma स्क्वायर.
Suppose I have a mass m, 4 masses are there at a distance of m, masses m, 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 m. Suppose this is m1, this is m2, this is m3, this is m4, and they are at a distance of a. Same story, same dialogue, only shifting of axis is there. Axis shift कर रहा हूं. तो यहां से रोटेट हो रहा है. क्वेश्चन मार्क. See here. m1 is equal to m2 is equal to m3 is equal to m4 is equal to m. r1 की वैल्यू 0 है, it lies on the axis. r3 is also 0, it lies on the axis. तो r1 is equal to r3 is equal to 0. अब ये एक स्क्वायर है, and we all know that diagonal of a square bisect each other. So अगर ये r है तो ये भी r होगा, ये भी r होगा, ये भी r होगा, और ये 90 डिग्री है और ये लेंथ a है. So we can apply here Pythagoras theorem. So when we apply Pythagoras theorem, we can say that r square plus r square is equal to a square. R plus r becomes 2r square is equal to a square. Therefore r square is equal to a square by 2. अब हमारा फॉर्मूला क्या बेटा, I का m1 r1 square plus m2 r2 square plus m3 r3 square plus m4 r4 square. बेटा m1 r1 की वैल्यू क्या आएगी, 0, क्योंकि r1 0, m2 is m, r2 square मतलब r square. अब r square की वैल्यू क्या बेटा, a square by 2 प्लस m3 r3. बेटा r3 की वैल्यू कितनी है, 0. So this will become 0 plus m4 is m, and r की वैल्यू कितनी है, r square की वैल्यू a square by 2. So we have 1 m square by 2 plus 1 mm square by 2 is 2 m a square by 2. So 2 और 2 cancel, answer ma square. Again हमारे पास 4 masses हैं, which are at a distance of a from each other with mass m. सबका mass same है, m, 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 m at a distance of a from each other. Find the moment of inertia about an axis passing through the point of intersection of the diagonals and perpendicular to the plane r part. Perpendicular to the plane. So we have to find the moment of inertia of this particle set system of the particle. Now you see, so diagonal of a square bisect each other at right angle. तो ये सब वैल्यू सेम है, तो सबकी वैल्यू क्या होगी, r. So this will also be r. By using Pythagoras theorem, we can write as r square plus r square is equal to a square. Therefore 2r square is equal to a square. Therefore r square is equal to a square by 2. In the previous example we have taken same thing. Now we have to find the moment of inertia. We have 4 particle m1 r1 square plus m2 r2 square plus m3 r3 square plus m4 r4 square. So m1 value is m, r1 is r square plus mr square plus mr square. All the masses are same and r, they are at a distance of same r.
So it becomes 4m r square. Now 4m, what is the value of r? R square value is a square by 2. So 2 ones are 2 twos are, so we have answer as 2ma square is our final answer. समझ आया? सर एक डाउट है बोलना. सर, वो जो तीसरा पॉइंट है वो तो परपेंडिकुलर नहीं है. नहीं वो तुझे लग रहा है, मैं बताता हूँ. ये ट्राइंगल है, हाँ सर. मास m1 m2 और m3 तीन कॉर्नर में, m1 m2 और m3, और एक्सेस इज ये एक्सेस. सपोज आई हैव 3 masses which are arranged such that they are at a distance of a from each other. Suppose masses m1 is equal to m, m2 is equal to m, and m3 is also equal to m. They are at a distance of a from each other, forming an equilateral triangle. Now the axis of rotation is passing through the centroid of the particle. Centroid समझते हैं? Centroid. इससे आर पार जा रहा है. टेक्निकली डायग्राम बनाओ तो कुछ इस तरीके से है. आर पार जा रहा है. तो अब यहां से देखो बेटा, ये हो गया परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ मास. तो ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है और ये भी आ रहा है. तीनों लेंथ सेम है, तीनों का मास सेम है. So moment of inertia will be 3 times of ma square. Now, sorry, 3 times of mr square. Now we have to find r. अब बेटा ये जो है सेंट्रॉइड है, तो ये मीडियन होगा पूरा, एंड मीडियन में सेंट्रॉइड g divides median in the ratio 2:1. यानी हमारा जो r है वो 2/3 पार्ट है मीडियन का. पूरे मीडियन का 2 पार्ट है आउट ऑफ 3. ये 2 पार्ट है, ये 1 पार्ट है, तो दिस इज 2 पार्ट आउट ऑफ 3. सो r इज इक्वल टू 2/3. और जो मीडियन है वो हाइट ऑफ द ट्राइंगल है. और ये हमने अभी ढूंढी थी. या दूसरा तरीका, इफ दिस इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, so this height will be equal to opposite side of 60 degree, and side opposite to 60 is what? √3/2 into hypotenuse. और hypotenuse क्या है? a. so r will be equal to √3/3a. समझा बेटा? r मिल गया, सब्स्टिट्यूट करेंगे. therefore I will be equal to √3ma times square. of a square. अभी a square की वैल्यू क्या बेटा? और सॉरी r square की वैल्यू क्या आएगी बेटा? हाँ, √3/3 a the A. whole square. So that becomes 3m into 3/9 a square. 3 3s are 9, cancel हो गया, बचा ma square. So I value is ma square. Mass density. So we have 3 types of mass density. One is linear mass density. This is denoted by lambda. So linear mass density lambda is mass
per unit वॉल्यूम. length. Mass per unit length. So lambda will be equal to mass per unit length. इसकी यूनिट होगी kg per meter. Second is aerial mass density. This is denoted by sigma. It is also called as surface mass density. So sigma will be equal to mass per unit area. Therefore, sigma is equal to mass upon area. The unit is kg per meter square. Third one is volume mass density. It is denoted by rho. So rho will be equal to mass per unit volume. Therefore, rho is equal to mass upon volume. Unit is kg per meter cube. We have to find moment of inertia of a rod. Of a rod. मेरे पास एक रॉड है, इसका क्रॉस सेक्शन जो है एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0. मतलब हम कंसिडर नहीं करते. ये उसका सेंटर है, हम यहां से इसे घुमा रहे हैं. सो ऐसे यहां से घुमाएंगे. m is the mass of the rod. L is the length of the rod. Mass of the rod and length of the rod. अब मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट c चाहिए. तो बेटा there is no m1, m2, m3, m4 particles here. Here the mass is distributed eventually. This is an uniform rod. Which rod? Uniform rod. तो इसका inertia कैसे? What we do at a distance of x, we consider a small element of length dx. Of length dx. ये small element का जो mass है, that is considered as dm. So dm is called as elementary mass. dm क्या कहते हैं? Elementary mass. तो हम रिलेशन कैसे ढूंढेंगे? Here the distribution of mass is about the length of the rod, जो कि क्रॉस सेक्शन निग्लेजिबल. सो हम यहाँ पे लैम्डा कंसिडर करते हैं. लैम्डा मतलब मास पर यूनिट लेंथ. मास पर यूनिट लेंथ इज कांस्टेंट. क्यों कांस्टेंट है? सिंस रॉड इज यूनिफॉर्म, इसलिए मास पर यूनिट लेंथ कांस्टेंट. तो यहाँ पे मास ऑफ द रॉड इज m, लेंथ ऑफ द रॉड इज l, mass of this particle is dm, and length of this particle is dx. So therefore dm का वैल्यू आएगा m upon l dx.
सो इस तरीके से हम एलिमेंट्री मास का रिलेशन ढूंढते हैं, m का रिलेशन विथ रिस्पेक्ट टू x। किसी को डाउट है तो पूछ सकते। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया of elementary mass b di, क्योंकि छोटा टुकड़ा मास का है तो उसका इनर्शिया भी छोटा होगा di, और हमें फॉर्मूला मालूम है किसी भी पार्टिकल का फॉर्मूला है एम आर स्क्वायर। सो di का मास आएगा dm, और r की जगह पे क्या आएगा, dm इज एट द डिस्टेंस ऑफ व्हाट, dm इज एट द डिस्टेंस ऑफ x। X. अगर dm इज एट द डिस्टेंस ऑफ x तो r की वैल्यू क्या आएगी, x आएगी। X square. X square. हाँ. Now we want moment of inertia of entire rod, तो वो I होगा, that will be integration of di, integration of di। अब इंटीग्रेशन ऑफ di मतलब इंटीग्रेशन ऑफ di की वैल्यू क्या है, dmx स्क्वायर। therefore I is equal to integration, बेटा dm का रिलेशन हमने अभी निकाला, dm का रिलेशन क्या है बेटा, m upon l into dx। तो dm की वैल्यू डालेंगे m upon l into dx तो क्या आएगा बेटा, m upon l into dx into क्या है, x square। therefore I is equal to what is constant, mass of the rod is constant, length of the rod is constant, what is variable, x is variable, so dx into xi। therefore I is equal to m upon l, इंटीग्रेशन हटेगा बेटा, x स्क्वायर का इंटीग्रेशन X cube upon 3. x cube upon 3, very good। therefore moment of inertia of the rod will be 3 बाहर आ जाएगा, 1 upon 3 m upon l, और अंदर क्या आएगा, x cube। so this is our सार्वजनिक formula for moment of inertia of the rod। मतलब इससे हम सबको ढूंढ सकते हैं। हाँ सर. We have to find moment of inertia about the center। we have a rod, center is the midpoint of the rod, length of the rod is l, center divides the rod in two parts, equal parts, so that's why this part becomes l by 2 and this part becomes l by 2। so अगर मैं इसे ओरिजिन मानूं 0 तो x एक्सेस और y एक्सेस के हिसाब से वाला पॉइंट आएगा माइनस l by 2। so this part will become l by 2 and this part will become minus l by 2 if we consider this as origin, x axis and y axis। तो हमारा जो इंटीग्रेशन आई सी का फॉर्मूला आएगा 1/3, ऊपर हमने अभी ढूंढा, m/l x क्यूब, द रेंज विल बी फ्रॉम माइनस l by 2 to l by 2। तो एक बार x की यहाँ पे l by 2 डालेंगे, एक बार x की यहाँ पे माइनस l by 2 डालेंगे, तो हमें आंसर मिलेगा IC इज इक्वल टू 1/3 m/l। बेटा फॉर्मूले में डालो क्या आएगा, l by 2 क्यूब माइनस माइनस l by 2 क्यूब, so this become 1/3 m/l। ये बेटा Zero आएगा हो जाएगा ना पूरा. l नहीं, क्यूब नहीं, बाई 8। बराबर. हाँ बेटा, नहीं कुछ नहीं सर. हाँ वो क्यूब माइनस होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। सो कैंसिलेशन करेंगे बेटा, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, तो 4 3 जा 12, तो वी हैव 1/12 m। बेटा l कैंसिल होगा, क्यूब का स्क्वायर हो जाएगा, सो द फॉर्मूला बिकम्स IC विल बी इक्वल टू 1/12 ml। कोई इशू? No sir. So last lecture we have studied about moment of inertia
of a rod. When axis is passing through center and perpendicular to length this is a rod of mass m and length l. Axis is passing through the center and it is perpendicular to the length. So its moment of inertia was denoted by IC. And last lecture we had a formula for IC is equal to 1 upon 12 ml square, right? Okay, we had a सार्वजनिक formula also in terms of x. तो ये center वाला था. When the axis was passing through edge, so this is point E, the moment of inertia at point E was 1 upon 3 ml square, right? And when it was passing through the midpoint M, so Im moment of inertia about M was 7 upon 48 ml square. These were the three formulas which we can use directly for JE. Since JE don't require any derivations. So these are three formulas. Now JE का एक question थोड़ा advanced. Now suppose the axis of rotation is this and the rod is at an angle of theta degree. So now we have to find the moment of inertia when it is rotated about the axis. So moment of inertia. तो ये कैसे करेंगे? At a distance of x, we will have a small elementary mass dm whose length is dx. Whose length is dx. When this rod is rotated about an axis, so this elementary mass will also rotate about an axis. It will have some radius, suppose it is r. So moment of inertia of this elementary mass will be di, which is equal to dm r square. dm r square. x square नहीं आएगा, r आएगा, क्योंकि r is the perpendicular distance of the particle from the axis of rotation. Any doubt? Vedant, महेश, क्लियर? ठीक है. अब यहाँ पे देखिए जो r है, this forms a right angle triangle. ये r है, ये x है, और ये हमारा थीटा है. तो ये थीटा का कौन सा साइड है? ऑपोजिट साइड. और ये कौन सा क्या है? हाइपोटेन्यूज. दिस इज अ राइट एंगल, राइट? तो हमारे पास साइन थीटा का फॉर्मूला आएगा opposite upon hypotenuse. Therefore r will be equal to x sin theta. कोई डाउट? अब ये वैल्यू हम यहां डालेंगे तो हमें क्या मिलेगा? di will be equal to dm into r square. r की वैल्यू क्या बेटा? x sin theta.
Now what we require is the moment of inertia of the rod, which is I, and that is the integration of di. Total ऐसे बहुत सारे टुकड़ों का एडिशन. Therefore I will be equal to integration of di. अब di की वैल्यू कितनी है? dm x square sin square theta. कोई इशू? अब एलिमेंट्री मास रॉड का अगर आप देखो, अगर आपके पास नोट्स हैं तो आप रॉड का डेरिवेशन निकालिए और उसमें देखिए एलिमेंट्री मास dm इज इक्वल टू m अपॉन l इंटू dx. लीना गुड इवनिंग. तो ये हमारी जो वैल्यू है वो हम सब्स्टिट्यूट करेंगे dm में, तो क्या मिलेगी? I इज इक्वल टू, आप साथ साथ में बोल सकते हो, आपकी आवाज नहीं आएगी लेकिन मुझे पता चलेगा आप बोल रहे हो. तो इंटीग्रेशन ऑफ dm की जगह पे क्या आएगा? m अपॉन l dx. आगे क्या बचा हमारे पास? x स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा. Therefore I is equal to what is constant? M mass of the rod is constant. Length of the rod is constant. Theta change होने वाला नहीं है. So you can say that sin square theta is also constant. बाकी बचा क्या? Integration of x square dx. अभी x square का इंटीग्रेशन क्या आएगा? x cube by 3, right Vedant? So we have m upon l sin square theta x cube by 3. अब बेटा बाहर क्या आएगा? 3 आ जाएगा. So this will be 1 upon 3 m upon l sin square theta ब्रैकेट में आएगा x क्यूब. याद है हमारा जो रॉड का फॉर्मूला है वो यही है, सिर्फ रॉड में ये नहीं था. चेक करो, सार्वजनिक फॉर्मूला फॉर रॉड वाज 1 upon 3 m upon l x क्यूब. यही है ना? सिर्फ यहाँ पे एक्स्ट्रा क्या आ गया? साइन स्क्वायर थीटा. अभी हमें रेंज चाहिए. क्या चाहिए? रेंज. तो अगर आप देख लो तो रेंज कहां से कहां शुरू होगी? ये 0 से लेके लेंथ ऑफ द रॉड विल बी l. तो हमारी रेंज जो आएगी वो कहां से कहां आएगी? 0 से लेके l तक. तो x की जगह पे क्या डालेंगे? l डालेंगे. तो हमारा फॉर्मूला आ जाएगा 1 upon 3 m upon l साइन स्क्वायर थीटा ब्रैकेट में आएगा l क्यूब. कुछ कैंसिल हो रहा है? l कैंसिल होगा, क्यूब कैंसिल होकर स्क्वायर आया. तो फॉर्मूले में वही आएगा 1 upon 3 ml स्क्वायर, बट बीच में क्या आ गया? साइन स्क्वायर थीटा. क्या आ गया? साइन स्क्वायर थीटा. समझ आया बेटा? तो ये हमारा फॉर्मूला बना. कोई इशू? कॉपी करना है? So factors affecting moment of inertia. First is mass, shape, size of the body. Second thing, the distribution of mass. Mass का distribution कैसा है in the body? About
the axis of rotation, distribution of mass कैसा है उसके ऊपर भी डिपेंड कर रहा है। किस किस के ऊपर डिपेंड कर रहा है? पहली चीज क्या है? मास, शेप, साइज। दूसरी चीज क्या है? किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास। ठीक है, मास का डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर है या प्रॉपर नहीं है उसके ऊपर डिपेंड कर। थर्ड चीज है द पोजीशन एंड ओरिएंटेशन ऑफ एक्सेस ऑफ रोटेशन। पोजीशन एंड ओरिएंटेशन ऑफ एक्सेस ऑफ रोटेशन। देखिए एक एग्जांपल लेते हैं। आपने ये देखा हुआ है कभी? क्या बोलते हैं इसको? टॉप। अब ये गोल घूमता है। Now suppose if I change the shape of the top, आपको क्या लगता है अगर दोनों का मास सेम है तो क्या दोनों की स्पीड सेम होगी? क्योंकि दोनों का क्या अलग है? शेप। ठीक है। तीसरी चीज, अगर मैं एक टॉप बनाऊं जो शेप सेम है लेकिन साइज में फर्क है तो फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? दोनों की स्पीड सेम होगी क्या? नहीं होगी, फर्क पड़ेगा। ये हो गया मास, शेप एंड साइज। अब मैं बात करता हूं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास। अगर ये टॉप का ये जो टोपी है, अगर ये टोपी यहां लगा दूं और इसे गोल घुमाऊं तो क्या सेम स्पीड पे ये फर्स्ट एंड लास्ट घूमेगा? नहीं, फर्क पड़ेगा। इसका स्पीड थोड़ा सा कम होगा क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास इक्वल नहीं है, प्रॉपर नहीं है, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास हो गया। एक और एग्जांपल लेते हैं, पोजीशन एंड ओरिएंटेशन ऑफ एक्सेस ऑफ रोटेशन। पोजीशन एंड ओरिएंटेशन ऑफ एक्सेस ऑफ रोटेशन मतलब अगर मैं सपोज ये बात करूं कि मेरे पास एक टॉप है, ये जो चोंच है इसकी सीधी है, अगर इसकी चोंच मैं ऐसे लगा दूं, आपको क्या लगता है ये प्रॉपर घूमेगा? नहीं ना, क्योंकि इसका एक्सेस शिफ्ट हो गया, ऐसे हो गया, तो ये प्रॉपर घूमने वाला नहीं है। कोई इशू? तो दैट इज कॉल्ड एज पोजीशन एंड ओरिएंटेशन ऑफ एक्सेस ऑफ रोटेशन। अगर एक्सेस ऑफ रोटेशन चेंज कर देंगे तो स्पीड में फर्क पड़ेगा। कोई इशू? सो वी हैव थ्री फैक्टर्स जिसके ऊपर वो डिपेंड करता है। फर्स्ट इज मास, शेप एंड साइज। दूसरा है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास। तीसरा है पोजीशन एंड ओरिएंटेशन ऑफ एक्सेस ऑफ रोटेशन। कोई डाउट? व्हाट इज सीएम? सीएम मीन्स center of mass. As per the dialogue, it is a point where the whole mass of the body, is concentrated. Where the whole mass of the body is concentrated.
In simple words, it is said that the whole mass of a body is concentrated means the net moment of mass at that point is zero. So actually net moment of mass means what? Suppose if I consider a mass m1, another mass m2, another mass m3, and we have n number of masses. Suppose mn. Now if I consider this as a rigid system, and if I consider a point, suppose O, so the distance of this point from the mass will be r1, this distance will be r2, this distance will be r3, this distance, say it is rn. So moment of mass says about point O will be m1 r1 plus m2 r2 plus m3 r3 plus dot 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 mn rn. Mathematically it is written as summation of mi ri, where I starts from 1 to n. So the net moment of mass will have some value at point O. Point O पे उसकी कोई तो value आएगी. अगर suppose if I shift the point, अगर ये point O यहाँ ना हो, कहीं और हो, suppose वो कहीं और है, वो point है यहाँ पे, और ये point का हमने नाम ले लिया O नहीं, ये point है P. तो इस point P के लिए R1 ये हो जाएगा, R2 ये हो जाएगा, R3 ये हो जाएगा, और Rn ये हो जाएगा. तो R की वैल्यू चेंज हो गई. अगर R की वैल्यू चेंज हो गई तो ये वैल्यू भी चेंज होगी, ये वैल्यू भी चेंज हो जाएगी. So ये वैल्यू at point O will be different and this value at point P will be different. ऐसे स्पेस में कहीं पे तो हमारे पास कोई एक ऐसा पॉइंट होगा, स्पेस पे कोई तो एक ऐसा पॉइंट होगा जिस पॉइंट पे at a point where we get summation of mi ri, I starts from 1 to n is equal to what? 0. स्पेस पे कोई तो एक ऐसा पॉइंट होगा जिस पॉइंट पे इसकी वैल्यू क्या बनती होगी? 0. That point is called center of mass. That point is called center of mass. Yani in simple words you say the net moment of mass at that point is 0. लॉजिक समझ में आया? कहीं पे तो एक पॉइंट होगा जिसपे उसकी मोमेंट ऑफ मास की वैल्यू क्या होगी? 0. रॉड जो होती है ना, रॉड का सेंटर ऑफ मास उसका मिड पॉइंट है. हमारे पास रिंग है, रिंग का सेंटर ऑफ मास उसका सेंटर है. हमारे पास डिस्क है, डिस्क का सेंटर ऑफ मास उसका सेंटर है.
समझ आ रहा है? तो हर बॉडी का अपना एक सेंटर ऑफ मास और उस सेंटर ऑफ मास पे एट सी m into r will be equal to what? 0. ये याद रखना. Summation of m into r becomes a. ये बहुत काम की चीज है अगले डेरिवेशन के लिए, इसीलिए बताया. रेडी? So parallel access theorem. We will consider any rigid body of negligible thickness any shape, negligible thickness, it will have a point which is called as center of mass. If we rotate this body from the center of mass, its moment of inertia will be IC. Say suppose the axis is shifted, axis remains parallel, but it is shifted to another point. Suppose O, and it is rotated now. So the moment of inertia will be changed. Let it be equal to IO. Now the parallel distance between the two axes, perpendicular distance between the two parallel axes, BH. Now IO is the moment of inertia of the rigid body about O. IC is equal to moment of inertia of the rigid body about C, where C is center of mass. Now what we consider? We consider a small elementary mass located at point P and its mass is dm. So when it is rotated from any of the axes, this particle P will move in a circular path. Now if this particle P will move in a circular path, it will have some radius. Now let that radius be equal to RC. So moment of inertia of this elementary mass at the point P, IC, can be written as integration of RC square dm. Now if the axis is shifted from C to O, this particle P will move again in a circular path. The circular path will be more big as its radius also increases. So let it be equal to IO. So the moment of inertia at point O will be equal to integration of RO square dm. Let point 1, this be point 2. Any doubt till now? Now construction. Suppose if I draw a right angle triangle CDP, where it is right angle at D, and this length, if I denote this as X. So in triangle CDP, by Pythagoras theorem, we can say that hypotenuse square is equal to side square plus side square. Therefore, CP square is equal to PD square plus CD square, where CP is what? It is denoted by RC. CP is denoted by RC. So this becomes RC square is equal to PD square plus CD is denoted as X. So that becomes X. Therefore, PD square will be equal to
RC square minus X square. This becomes step 3. Now if I extend this, I have a triangle ODP also, which is also a right angle triangle. So in triangle ODP, using Pythagoras theorem, in triangle ODP, by Pythagoras theorem, we have OP square is equal to hypotenuse square is equal to side square plus side square. So I have PD square plus OD square. Now OP square is equal to PD square plus what is OD? H plus X. H plus X. Yes, it is OC plus CD. So OC plus CD the whole square. Now we can substitute the value. OP is nothing but RO. PD from 3 we can write it is RC square minus X square. OC is H and CD is X. So this can be written as H plus X the whole square. So solving mathematically, algebraically, we have RO square is equal to RC square minus X square plus H square plus 2HX plus X square. Anything cancels out? Yes. X square cancels out. So we have RO square is equal to RC square plus H square plus 2HX. Now what we required is integration. Integrating with respect to dm, we have integration of RO square dm is equal to integration of RC square dm plus H is constant, so H square बाहर आ गया, integration of dm plus 2H constant है वो बाहर आ गया, integration of X dm. Now what can you say about integration of RO square dm is what? RO From cube by 1 it 3. is IO. Okay. So we can write this as IO Yes. is equal to this is IC I see. plus H square. What is integration of dm? It is m, mass of the rigid body, plus 2H. What is X? X is the distance of the mass, perpendicular distance. So X into m become moment of mass. X into m become moment of mass. Then integration of X into m becomes what? Net moment of mass. It becomes net moment of mass. Yes. And net moment of mass at what point? Which point? Net moment of mass at Center. C. C is Center. what? Center of mass. Center of So mass. what is net moment of mass at point C? 0. XM. 0. Yes. Net moment of mass at point C becomes 0. So anything multiplied by 0 is what? 0. 0. Therefore, we have a formula. IO is equal to IC plus MH square. Any doubt? Any doubt? No, sir. Statement for center of mass, we write integration of X dm is the total moment of mass at point C, that is center of mass, is always 0. Therefore, integration of X dm becomes 0.
Now suppose I have a rod whose moment of inertia about the center C, we have formula IC is equal to ML square by 12. याद है? Now suppose the axis is shifted यहाँ से यहाँ कर दिया. This is point E. The moment of inertia is IE. Now the two axes are parallel to each other. So the distance between the two parallel axes is denoted by H. If the length of the rod is L, then this H will be equal to L by 2. So according to parallel axis theorem, IO is equal to IC plus MH square. IO मतलब जो हमें ढूंढना है, क्या ढूंढना है? IE. IC जो दिया हुआ है क्या है? Square by 12. ML square by 12 plus MH square. The value of H is what? L by L by 2. So this is ML square by 12 plus ML square by 4. So we can take LCM. We have IE is equal to ML square by 3. So now I am considering a ring. तो रिंग के लिए पढ़ रहे हैं, डबल ऐसे बनाते हैं हम लोग, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, रिंग. ठीक है. रिंग का सेंटर है C और इसका रेडियस है कैपिटल R. Now the axis is passing through the center and rotated with the moment of inertia IC. तो अब ये ढूंढेंगे, स्टार्ट करें. So what we will consider is the small elementary mass dm. अंगार सारखा आज आवाज So we will consider a small elementary mass dm. So moment of inertia of elementary mass dm will be di, which is equal to mr square. That means dm into r square. So therefore moment of inertia of ring will be I is equal to integration of di, which is equal to integration of dm r square. अब बेटा r, capital R is constant. constant. So capital R is constant. Therefore you can say that I is equal to r square integration of dm. What is integration of dm? M. So the formula becomes mr square. So moment of inertia of the ring whose axis passes through center and perpendicular to the plane is given by IC is equal to mr square. IC is equal to mr. Now suppose the axis is shifting. Suppose axis is shifted from C center
to the circumference. And axis remains parallel. That means we have a ring. This is center C. Axis यहाँ था, यहाँ से शिफ्ट होके यहाँ आ गया. ये एग्जांपल है अम्ब्रेला का. छतरी होती है छतरी, उसे गोल गोल घुमाते हैं तो उसका एक्सेस सेंटर से. ठीक है, अब एक्सेस शिफ्ट हो गई, सपोज यहाँ आ गया ओ पे, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया IC है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया IO है. And distance between two parallel axes is denoted by h, which is nothing but r radius. So according to parallel axis theorem, IO is equal to IC plus h square. Therefore IO is equal to IC की वैल्यू क्या बेटा? mr square. IC value is mr square plus mh square. h की वैल्यू क्या बेटा? R square. R. r. So mr square plus mr square becomes 2 square. 2mr square. So therefore when the axis is passing through the circumference and perpendicular to the plane, तो फॉर्मूला आएगा 2mr square. कोई इश्यू? No, sir. कॉपी करना है बेटा? हाँ सर. कर लो बेटा. Application of parallel axis theorem and perpendicular axis theorem with shape ring. With shape ring. तो ध्यान से देखिए, हमारे पास रिंग है, ये एक्सेस है पासिंग थ्रू द सेंटर and ring has a radius r. So moment of inertia is IC, which is equal to mr square. Now if axis is tangential and perpendicular to plane of rotation, so this is C, axis is tangential and perpendicular to the plane of rotation. So suppose this is point O. So moment of inertia about point O, IO by parallel axis theorem. अभी हमने किया है, दोबारा कर रहा हूं. Basically IO is equal to IC plus mh square. IC मतलब ये, उसका फॉर्मूला है mr square, हमने ऊपर पढ़ा, plus mh square. Now h is the distance between two parallel axes, which is nothing but radius r. So the formula becomes mr square plus mr square, 2mr square. IO is 2mr. Now suppose axis is about diameter. Axis is about diameter and passing through center. Passing through C. So बेटा ये passing through C perpendicular वाला तो IC है.
वी हैव अ फॉर्मूला एम आर स्क्वायर, लेकिन अबाउट द डायमीटर मतलब ये, और ये कौन सा थ्योरम आ गया? परपेंडिकुलर। यस, अकॉर्डिंग टू परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। तो सपोज ये अबाउट द डायमीटर है आई एक्स, दिस इज आई वाई। So according to perpendicular axis theorem, Ix plus Iy is equal to Iz. Ix क्या है? About the diameter. So इसका इंटीग्रेशन आएगा r square dm, है ना? Ix का इंटीग्रेशन क्या बेटा? r square dm। Yes, sir. और Iy का इंटीग्रेशन क्या आएगा? इंटीग्रेशन ऑफ r square dm, क्योंकि दोनों के लिए रेडियस तो सेम है ना, सो दोनों सेम हो गए। In simple words, you can say that Ix is equal to Iy. So let Ix is equal to Iy is equal to Id, where Id is moment of inertia about diameter. About diameter. तो बेटा फॉर्मूले के हिसाब से क्या आएगा? Since Ix plus Iy is equal to Iz, Ix की जगह पे आएगा Id, Iy की जगह पे भी आएगा Id, और Iz की जगह पे आएगा Ic, क्योंकि it is about the center. So Id plus Id become 2Id is equal to Ic, therefore Id is equal to Ic by 2. by 2। अभी Ic की वैल्यू क्या है? mr square। तो Id will be equal to what? mr square by 2. So this becomes the formula about the diameter. कोई इश्यू? No, sir. अब सपोज हम एक्सेस को शिफ्ट करते, now axis is tangential and about diameter. Tangential and about diameter मतलब ये हमारा रिंग है, दिस इज अबाउट डायमीटर ID, अभी टेंजेंशियल है और अबाउट है, मतलब ये सपोज दिस पॉइंट इज T, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज IT। अब बेटा एक दूसरे से दोनों क्या है? पैरेलल। पैरेलल है ना, तो यहाँ पे कौन सा थ्योरम लगेगा? Parallel axis. पैरेलल एक्सिस। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या बोलता है? IO इज इक्वल टू IT आएगा ना यहाँ पे? IC प्लस MH स्क्वायर। अभी IO की जगह पे क्या आएगा? IT। और IC की जगह पे क्या आएगा? ID। प्लस MH की जगह पे क्या आएगा? R। R. R। वेरी गुड। ID की वैल्यू कितनी है? mr square by 2। mr square by 2। Yes, very good. mr square by 2 plus mr square. So you can take LCM. Yes. 2 plus 1 becomes what? 3 3। mr square. 3 mr square by 3 2। by 2 mr 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 square. square। कोई डाउट बेटा? No, sir. नहीं सर। पक्का? हाँ सर. किसी को डाउट हो तो पूछ सकता है। अब यहाँ पे देखो एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज आपके साथ शेयर करूं, ध्यान से देखना। सब तैयार? हाँ सर.
Now suppose I have a ring. ध्यान से देखना बेटा, ये खेल. अब मेरे पास एक रिंग है. सेंटर का फॉर्मूला क्या है? mr स्क्वायर. mr square. मतलब कितना mr स्क्वायर? 1 mr स्क्वायर. 1 mr square. जब टेंजेंट हो जाएगा ना तो 1 + 1 करना है. मतलब ये C है ना हमारा सेंटर C. C इज व्हाट? mr स्क्वायर. mr square. तो इसको +1 करेंगे यानी 1 + C हो जाएगा. 1 plus mr square. तो mr स्क्वायर + mr स्क्वायर. 2 mr. 2 mr square. अब ये जो अबाउट डायमीटर है ना वो C का आधा है. यानी mr अबाउट square by डायमीटर C का आधा मतलब mr square by mr 2. square by 2. mr स्क्वायर बाई 2. याद रहेगा. हाँ सर. और जब ये टेंजेंट हो जाएगा, बेटा टेंजेंट हुआ तो 1 प्लस किया ना, हाँ. तो यहाँ पे भी टेंजेंट हो गया तो 1 प्लस करेंगे. तो दिस हाँ. विल बी 1 + d यानी 1 + C by 2. by 2 क्या बेटा? mr स्क्वायर बाई 2 हम्म. Three + by 1. 2 mr. यस, वेरी गुड. सो दिस बिकम 3 by 2 mr स्क्वायर, हम्म. जो हमने अभी प्रूव किया. ये Yes. हाँ. तो ये ओरली हम मेमोराइज कर सकते हैं. दिस इज C, दिस इज 1 + C, दिस इज C by 2, दिस इज 1 + C by 2. क्या बोला? वापस बोलो. दिस इज C. C, this is 1 plus C. this is C by 2. C D. by 2. C by 2, this is 1 1 plus plus C by 2. by 2. कोई इश्यू बेटा? उसका भी बताइए प्लीज. Okay, now we are going to study moment of inertia of disk. Now disk इस तरीके से बनाई गई है, passing through the center. So we are following moment of inertia of a disk. First axis, passing through center C and perpendicular to plane. यानी ये प्लेन है, इससे परपेंडिकुलर है, और ये रोटेटर है विद द मोमेंट ऑफ इनर्शिया I. ठीक है बेटा. अब आगे चलते हैं. इसका रेडियस कितना है? R. रेडियस कितना है? R. ठीक है बेटा. अब इसे स्टडी करना है तो कैसे करेंगे? इफ वी कंसिडर अ स्मॉल एलिमेंट, तो स्मॉल एलिमेंट अगर मैं कहीं यहां ले लू, एट द डिस्टेंस ऑफ x, तो इस स्मॉल एलिमेंट का डायग्राम अगर देखोगे, स्मॉल एलिमेंट का एक टुकड़ा बन जाएगा रिंग के जैसा. क्योंकि ये स्मॉल एलिमेंट एट द डिस्टेंस ऑफ x एक नहीं है, बहुत सारे है ना, तो ये सारे टुकड़े बनेंगे, क्या बनेंगे? एक रिंग. तो इसे कहेंगे एलिमेंट्री मास dm होगा इन द फॉर्म ऑफ अ रिंग. अब ये जो रिंग है, अब ये जो रिंग है
इसका रेडियस x है और ये जो थिकनेस है वो dx है। तो लास्ट टाइम फॉर द रॉड हमने लीनियर मास डेंसिटी लिया था, यहाँ पे वी हैव टू कंसीडर एरिया मास डेंसिटी। ये मैं बताता हूं एरिया मास डेंसिटी क्या होता है। एरिया मास डेंसिटी मतलब एरिया मास डेंसिटी मतलब मास अपॉन एरिया विल बी कांस्टेंट as the mass is distributed eventually in all the directions. This is denoted by sigma. तो सिग्मा का फॉर्मूला हो गया मास ऑफ द डिस्क m अपॉन एरिया ऑफ द डिस्क विल बी पाई आर स्क्वायर, और इस छोटे से एलिमेंट का मास क्या होगा dm, और इसका ये एरिया क्या है, ये एरिया। अगर सपोज मैं इसको कट करूं तो ये एक लंबी सी स्ट्रिप बन जाएगी, और ये स्ट्रिप का जो लेंथ है वो सरकमफ्रेंस है 2 पाई x, और जो थिकनेस है दैट इज dx। तो एरिया विल बी लेंथ इनटू ब्रेथ, दैट मीन्स 2 पाई x dx। तो यहाँ एरिया आएगा 2 पाई x dx। So what can you say about dm? dm will be equal to, यहाँ पे पाई और पाई कैंसिल हो गया, that will be 2mx dx अपॉन r स्क्वायर। एलिमेंट्री मास ढूंढना बहुत जरूरी था, कोई इश्यू? आगे चलते हैं। Now if I have to find the moment of inertia of this elementary mass, moment of inertia of elementary mass, हम दोबारा एक बार देखेंगे क्योंकि आपने जीवन में पहली बार ये चीज देखी है। मोमेंट ऑफ inertia of elementary mass dm will be di, therefore di का फॉर्मूला आएगा mr स्क्वायर, मतलब dm इंटू आर स्क्वायर। अब इसमें इस एलिमेंट्री मास का रेडियस कितना है x, so it will be dm into x square. Now if I have to find moment of inertia of disk, so that will be integration of di, integration of di which is equal to integration of di की वैल्यू क्या बेटा dm into x square, and what is the value of dm? dm की वैल्यू ये है, सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन ऑफ di will be equal to I which is equal to integration of dm की जगह पे क्या आएगा 2m upon r square x dx into x square. So this is 2 constant, m constant, r square constant, x into x square becomes x cube dx. अब बेटा ये इनफाइनाइट इंटीग्रेशन है, हमें तो डेफिनाइट चाहिए, क्योंकि जो डिस्क है, जो डिस्क है उसका रेडियस 0 से शुरू होता है और r पे खत्म हो रहा है। सो यहाँ पे लिमिट रहेंगे फ्रॉम 0 टू कैपिटल R. So what is the integration of x raised to 3? This is 2m upon r square. x raised to 3 बेटा इंटीग्रेशन का फॉर्मूला, x raised to n dx का फॉर्मूला, यस x raised to n plus 1 upon n plus 1. तो यहाँ पे आएगा x raised to 3 plus 1 becomes 4 upon 4. Range will be 0 to, range will be 0 to, so एक बार अपर लिमिट डालेंगे, एक बार लोअर लिमिट तो 0 है, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। So this will be 2m upon r square into r raised to 4 upon 4 minus 0. कुछ कैंसल हो रहा है बेटा, r square कैंसल हो गया, 2 1 जा 2 2 जा हो गया, so become 1/2, क्या बच गया 1/2 m, और यहाँ बचा सिर्फ r square. So this is the moment of inertia of the disk.
तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द डिस्क का फॉर्मूला हाफ mr स्क्वायर, half mr square when the axis is passing through the center, when the axis is passing through the center and perpendicular to the, यस बेटा एक बार और करेंगे जोआ, कोई टेंशन नहीं। आप लोग अपने वहां पे मन मन में बोलो आंसर। सो वी आर गोइंग टू स्टडी मोमेंट ऑफ inertia of a disk whose axis is passing through, whose axis is passing through center and perpendicular to the plane, perpendicular to the plane। so हमने एक डिस्क ले लिया, axis passing through center and perpendicular to the plane, it is rotating about the axis with moment of inertia I, where m is the mass of the disk, capital R is the radius of the disk, दिख रहा है ना सबको? Okay, m is mass of the disk, r is radius of the disk। आगे चलते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया I है जो हमें ढूंढना है। नाउ व्हाट वी आर कंसिडरिंग, हमने ये डिस्क लिया, थोड़ा बड़ा बनाया मैंने, दिस इज अ सेंटर, एट अ डिस्टेंस x हमने एक छोटा सा एलिमेंट लिया और x डिस्टेंस पे ये सारे एलिमेंट्स को ज्वाइंट करेंगे तो एक रिंग बन जाएगा। ये जो डिस्टेंस है इसका वो dx है एंड द मास ऑफ द डिस्क रिंग इज dm। दिस इज कॉल्ड एज एलिमेंट्री मास। वो एलिमेंट्री मास जो है वो इज एक्चुअली एज एक क्या बन रहा है, वो रिंग है। रिंग का रेडियस कितना है x, और वृत्त कितनी है dx। तो इस रिंग का एरिया क्या होगा, दो तरीके से इसे पढ़ सकते हैं, आउटर एरिया माइनस इनर एरिया, और दूसरा तरीका इफ आई कट दिस स्ट्रिप, ये जो रिंग को मैं कट करूंगा तो वो एक स्ट्रिप बन जाएगी पतली सी लंबी सी, जिसका थिकनेस विल बी dx और जो लेंथ होगा दैट विल बी द सर्कमफ्रेंस ऑफ द रिंग व्हिच इज 2 पाई x। तो स्मॉल एलिमेंट्री एरिया ऑफ द मास विल बी लेंथ इनटू ब्रेथ, दैट मींस 2 पाई x इनटू dx। ये हो गया उस छोटे से टुकड़े का एरिया। कोई डाउट? नाउ वी नो दैट mass is distributed equally, that is surface mass density is constant। surface mass density मतलब sigma which is constant। sigma होता क्या है, mass per unit area। now if we talk about the entire disk, तो mass होता है m, एरिया होता है पाई r स्क्वायर,
And if we talk about elementary mass, यानी elementary ring, तो उसका मास आएगा dm और उसका एरिया आएगा 2 pi x dx, और ये कांस्टेंट है इसलिए दोनों इक्वल आ जाएंगे. If both are equal, then you can say dm is equal to what? m upon pi capital R square into 2 pi x dx. कैंसल होता है बेटा, पाई और पाई कैंसल. Therefore dm is equal to 2m upon R square x dx. ये मास निकालने का मकसद क्या? Why we are finding a dm? तो ये क्यों ढूंढा? Now हम आते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया. मोमेंट ऑफ इनर्शिया of, yes, elementary mass will be di, और हमने I का फॉर्मूला पढ़ा हुआ है mr स्क्वायर. तो di का मास है dm और r स्क्वायर मतलब dm जो है मास, उसका रेडियस दैट इज x, so that becomes x square. Now you see यहाँ पे मास भी डिफरेंशिएबल है और x भी वेरिएबल. So either we have to convert x in the form of m or you have to convert dm in the form of dx. तो मेरा जो dm है, I am converting dm in the form of dx, तो मैं यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दूंगा. तो जब मैं इसे यहाँ से यहाँ सब्स्टिट्यूट करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? di will be equal to 2m upon r square into x dx. ये dm है बेटा, into x square. So di will be equal to 2 into capital M upon r square. X into x square becomes x cube and differentiable part of x. अब हमें एलिमेंट्री मास का इनर्शिया नहीं चाहिए, हमें तो पूरे डिस्क का चाहिए, और दैट वैल्यू इज व्हाट I. तो हमें I ढूंढना है. Therefore moment of inertia of the disk, that is I, which will be equal to integration of di. Therefore I is equal to integration of di की वैल्यू कितनी है बेटा? That is 2m upon r square into x cube dx. अब बेटा इसमें से कांस्टेंट बाहर कौन है? 2 बाहर आ गया, m बाहर आ गया, कैपिटल R स्क्वायर बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ x क्यूब dx. अब इसकी रेंज x की कहां से कहां तक? x कहां से शुरू हो सकता है? 0 से, और x कितना बड़ा हो सकता है? ज्यादा से ज्यादा यहां पहुंच सकता है क्योंकि डिस्क यहां खत्म हो जाता है. तो x की वैल्यू जो है, x की जो रेंज है वो 0 से लेके कैपिटल R तक. तो x की वैल्यू जो रेंज है वो 0 से लेके कैपिटल R तक है, वो मैंने यहाँ डाल दी. नाउ व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ x क्यूब? इंटीग्रेशन ऑफ x क्यूब इज व्हाट? x raised to 4 upon 4 and the range is from 0 to capital R. अब एक बार बेटा कैपिटल R डालेंगे, एक बार 0 डालेंगे, तो हमें क्या मिलेगा? यहां लिख रहा हूं, therefore I will be equal to 2m upon R square. Once we have to substitute the upper limit R raised to 4 by 4 and then lower limit 0. तो बेटा यहाँ पे आ जाएगा 2m upon R square into R raised to 4 by 4. कैंसिल करेंगे बेटा, क्या कैंसिल हो रहा है? R स्क्वायर, ये 4 में से 2 गए और ये 1 जा और ये 2 जा, तो क्या बच गया? यहाँ 2 बचा, ऊपर 1 बचा, m बचा, और यहाँ बचा सिर्फ
Therefore, moment of inertia of the disk is half mr square. कोई डाउट बेटा? हेलो, अच्छा पहले वाला आसान था, ये वाला आसान था? ये वाला? दोनों सेम थे, दोनों सेम थे। ओनली थिंग इज व्हाट, अब हमने तीसरी बार कर लिया। So now we are going to study application of parallel access theorem and perpendicular access theorem in disk. In disk, तो ये डिस्क है बेटा, एक्सेस पासिंग थ्रू सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया IC, द फॉर्मूला इज mr स्क्वायर बाय 2, अभी डिराइव किया। हियर द एक्सेस इज passing through center and perpendicular to plane. Axis is passing through center and perpendicular to the plane. ये एक्सेस है। अभी हम एक्सेस शिफ्ट करते हैं। एक्सेस इज passing through edge, यानी कि टेंजेंशियल एंड परपेंडिकुलर टू प्लेन। यानी इसमें जो वर्ड है हमारा इंपॉर्टेंट है, टेंजेंशियल एंड परपेंडिकुलर टू प्लेन। मतलब कैसे? ये डिस्क है, ये सेंटर है C, ये ऐसे है, तो इट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन, ये रेडियस है R। अब सेंटर वाला तो हमने पढ़ा हुआ है, द वैल्यू इज व्हाट, IC, और ये सपोज पॉइंट हम ले लेते हैं E, तो ये बन जाएगा IE। तो कौन सा एक्सेस थ्योरम लगेगा? अकॉर्डिंग टू पैरेलल एक्सेस थ्योरम, IO इज इक्वल टू IG प्लस MH स्क्वायर। IO मतलब जो हमें फाइंड करना, क्या फाइंड करना हमें? IE। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ IC? IC passing through the center, half mr square plus mh square. What is the distance between the two parallel axes denoted by h? H की वैल्यू क्या है? R. So IE is equal to half plus 1 becomes 3 by 2 mr square. So इस तरीके से हम पैरेलल एक्सेस थ्योरम इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आगे चलते हैं। Axis passes through center and about diameter यहां से रोटेट करेंगे अबाउट द डायमीटर ID। अब बेटा हमें सेंटर का तो मालूम ही है, IC, द फॉर्मूला इज हाफ mr स्क्वायर। अबाउट द डायमीटर मतलब परपेंडिकुलर एक्सेस थ्योरम, याद आया? अबाउट द डायमीटर इज हाफ ऑफ द अबाउट द सेंटर। तो सेंटर क्या है बेटा? हाफ mr स्क्वायर, उसका आधा।
हाफ का हाफ कितना होता है बेटा? 1/4 mr²। याद आया? लास्ट लेक्चर रिंग के लिए किया था। अब आगे चलते हैं। लास्ट, एक्सेस इज टेंजेंशियल एंड अबाउट डायमीटर। अब बेटा ये तो हमने पढ़ लिया, अबाउट डायमीटर आई डी, द वैल्यू इज 1/4 mr²। अब इससे पैरेलल और टेंजेंट, ये सपोज दिस पॉइंट इज टी, यहां से रोटेट करेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई टी। कौन सा थ्योरम? पैरेलल एक्सेस थ्योरम। आयो इज इक्वल टू आई सी प्लस एम एच कर, ये फॉर्मूला। आयो मतलब जो फाइंड करना है, दैट इज आई अबाउट टेंजेंट। आई सी जगह पे क्या आएगा? आई डी आएगा प्लस mh²। आई डी की वैल्यू क्या बेटा? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आई डी? 1/4 mr² प्लस एम एच। एच की वैल्यू मतलब डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल एक्सेस, r²। एच की वैल्यू r होगी, तो वी कैन टेक एलसीएम। वेरी गुड बेटा। So it will be 4 1 the 4 plus 1. It is 5/4 mr²। तो टेंजेंशियल का फॉर्मूला 5/4 mr²। We are talking about cylinder. Maybe cylinder. This is right circular cylinder. Right circular cylinder. तो right circular cylinder हमारे पास दो हैं। One is hollow right circular cylinder. The second one is solid right circular cylinder. मतलब hollow मतलब खोखला, सॉलिड मतलब ठोस, भरा हुआ। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे हॉलो से। हॉलो राइट सर्कुलर सिलेंडर, ये एक किस्म का पाइप है। ठीक है बेटा। इसकी हाइट जो है वो है h, जिसे हम लेंथ ऑफ द सिलेंडर बोल देते हैं। मास ऑफ द सिलेंडर इज कैपिटल M। मास ऑफ सिलेंडर R is radius of the cylinder। R is radius of the cylinder। अब इस मोमेंट ऑफ इनर्शिया I चाहिए। तो हम क्या करते हैं बेटा, हमने एक छोटा सा टुकड़ा लिया। अगर हमने एक छोटा सा टुकड़ा लिया है और इस टुकड़े का जो मास है दैट इज dm, और जो ये टुकड़े की थिकनेस है दैट इज dx। ठीक है बेटा। सॉल्व तो कर सकते हैं पर इसको शॉर्टकट में कर सकते हैं। देखो शॉर्टकट बड़ा आसान। अगर ये एक रिंग है
तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द elementary mass will be moment of inertia of the ring. तो di is moment of inertia of the ring और रिंग का फॉर्मूला क्या बेटा एम आर स्क्वायर। रिंग का फॉर्मूला क्या है एम आर स्क्वायर। एम की जगह पे क्या आएगा डी एम आर स्क्वायर। Now what I required is the moment of inertia of the cylinder. Hollow right circular cylinder. तो I का फॉर्मूला आएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी आई। दैट इंप्लाइज इंटीग्रेशन ऑफ डी आई का फॉर्मूला है डी एम आर स्क्वायर। अब बेटा जितने भी आप टुकड़े कर लो सब टुकड़ों का रेडियस तो सेम ही रहेगा। रेडियस कभी चेंज होने वाला नहीं। अब हम लोग इस एक्सेस से इसको घुमा रहे हैं तो आर कांस्टेंट बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ बचेगा डीएम। व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ डीएम। डीएम का इंटीग्रेशन क्या आएगा एम। सब टुकड़ों को ज्वाइन करोगे तो इट विल बी टोटल सिलेंडर एंड मास ऑफ द टोटल सिलेंडर इज एम। तो हमारा फॉर्मूला आएगा एम आर स्क्वायर। तो अगर आप ध्यान से देखें तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया of the hollow right circular cylinder has same formula as moment of inertia of the ring. So moment of inertia of the hollow right circular cylinder has same formula as moment of inertia of ring. बहुत सारे रिंग्स को एक के ऊपर एक रखोगे तो वो एक हॉलो पाइप ही बन जाएगा। समझ आया बेटा। कई लोग इसे इसी तरीके से समझाते हैं कि अगर मेरे पास एक रिंग है और इस रिंग के ऊपर रिंग के ऊपर रिंग के ऊपर रिंग के ऊपर एक अगर बहुत सारे रिंग्स ज्वाइन करूंगा तो वो एक पाइप बनता रहेगा। तो दैट्स व्हाई द फॉर्मूला इज सेम। एक ये तरीका है दूसरा ये तरीका है शॉर्टकट वाला। इससे भी एक शॉर्टकट तरीका है। सपोज अगर मेरे पास एक एक रिंग है एक पाइप है ये हॉलो पाइप है और ये हॉलो पाइप को अगर मैं यहां से ऐसे रख के सब करके एक ऐसे 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 पंच मारूं प्रेशराइज करूं तो ये चपटा होके क्या बन जाएगा एक छोटा सा रिंग बनेगा। ऐसे इसको इसका प्रोजेक्शन देखेंगे तो वो एक रिंग ही होगा। प्रोजेक्शन विल बी अ रिंग। So similarly, now if I consider moment of inertia of a solid right circular cylinder. So moment of inertia of solid right circular cylinder और उसका एक्सेस पासिंग थ्रू द सेंटर है। अगर मैं इसे ऊपर और नीचे से ऐसे प्रेशराइज करूं और चपटा करूं तो चपटा करके ये क्या बन जाएगा डिस्क बन जाएगा ना। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द डिस्क का फॉर्मूला क्या है हाफ एम आर स्क्वायर। तो इसका भी फॉर्मूला हाफ एम आर स्क्वायर ही है। सेम स्टोरी। समझ आया बेटा कोई इश्यू। देख लो बेटा चाहिए तो।
अगर मैं इसका एक छोटा सा टुकड़ा लूं, और इसका मास है dm, रेडियस है कैपिटल R, so moment of inertia of elementary mass will be di, जिसका फॉर्मूला है dm into r square. Therefore moment of inertia of solid right circular cylinder I will be equal to integration of di, which is equal to integration of di की वैल्यू है dm r square. Therefore I is equal to r square, कांस्टेंट है वो बाहर आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ dm, सॉरी फॉर्मूला आएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सॉलिड इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द डिस्क, इसीलिए हाफ आएगा, हाफ, तो ये हाफ बाहर आ जाएगा. सो दिस विल बी हाफ r स्क्वायर, dm का इंटीग्रेशन क्या आएगा m, द फॉर्मूला बिकम्स हाफ ऑफ m r. कोई इशू? यहाँ पे हमने पढ़ा था मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिंग. यहाँ पे है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सॉलिड सिलेंडर इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द डिस्क, इसलिए यहाँ पे आएगा हाफ. कोई डाउट बेटा? So now we are going to study the variations. That means when we change the position of the axis of rotation, then what happened to their inertia, moment of inertia of the hollow right circular cylinder. तो सबसे पहले this is a hollow right circular cylinder. ये एक्सेस तो आपने पढ़ा हुआ है, सिमिलर टू द रिंग mr स्क्वायर. अब एक्सेस को थोड़ा सा शिफ्ट करते हैं. सपोज यहाँ पे लेके गए अबाउट द सरफेस, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया सपोज IO, तो दिस इज IC. दोनों एक दूसरे से क्या है बेटा? पैरेलल. So we have to use parallel axis theorem. So IO is equal to IC plus MH square. IO is equal to IC value is what? MR square plus MH square. What is H? Distance between two parallel axes. और वो है क्या? Radius. So instead of H there will be R. Therefore IO is equal to MR square plus MR square, 2MR square. Same as ring. But suppose हम axis change करते हैं. हम दिस इज हॉलो राइट सर्कुलर सिलेंडर. हम सेंटर ऑफ द लेंथ से पास ऐसे गोल घुमा रहे सिलेंडर को. जैसे ये एक सिलेंडर है, हम इसको सेंटर से यहां से, तो अगर हम इसको ऐसे गोल घुमा रहे हैं तो कैसे होगा? ये वाला समझ आया? तो यहाँ पे आप देखो, सिलेंडर इज मेड अप ऑफ टू शेप्स. हॉलो सिलेंडर इज मेड अप ऑफ टू शेप्स. बता सकते हो? शेप ऑफ हॉलो राइट सर्कुलर सिलेंडर हैज टू शेप. एक शेप ऑफ रॉड, लंबा है, प्लस शेप ऑफ रिंग. दो शेप है. अगर मैं इस सिलेंडर को ऐसे चपटा कर दूं,
तो वो एक रॉड बन जाएगी, यस और नो। और अगर ऐसे चपटा करने पे वो एक रॉड बन गई, तो रॉड का फॉर्मूला, थिकनेस वी आर कंसिडरिंग निग्लेजिबल, तो रॉड का फॉर्मूला फ्रॉम द सेंटर विल बी IC which is 1/12 ml square, where m is the mass and L is the length of the cylinder. 1/12 ml square plus, now अगर ये सिलेंडर को मैं ऐसे चपटा करूं तो वो एक रिंग बन जाएगा। सो वो एक रिंग बनेगा। अगर वो एक रिंग बना है तो रिंग का फॉर्मूला है अबाउट द डायमीटर। बेटा अगर ध्यान से देखो, ये एक रिंग है और ये जो है वो अबाउट द डायमीटर है। इसका फॉर्मूला ml²/12 था। रिंग अबाउट द डायमीटर इज ml²/2, तो फॉर्मूला आएगा 1/2 mr। तो ये हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द राइट सर्कुलर सिलेंडर when the axis is passing through center and perpendicular to length है। axis passing through center and perpendicular to length, so formula will be what? 1/12 ml² plus 1/2 mr²। Same thing is with the solid also। आपको now suppose this is a hollow right circular cylinder and I have to find moment of inertia about this position. So what will be the formula for moment of inertia about this position? Take 30 seconds. Now you can see similar to this concept, एक्सेस सेंटर से लेके कहीं पे भी शिफ्ट हो, रिंग वाइज वो अबाउट द डायमीटर ही रहा। तो अबाउट द डायमीटर रिंग के हिसाब से फॉर्मूला विल बी हाफ mr² प्लस रॉड के हिसाब से अगर हम बात करें तो रॉड फ्रॉम द सेंटर की जगह पे वो शिफ्ट हो गया एज पे, यानी रॉड के लिए एक्सेस फ्रॉम द एज है और उसका फॉर्मूला 1/3 ml²। बाकी रिंग के हिसाब से वो अबाउट द डायमीटर, रिंग के हिसाब से वो अबाउट द, ठीक है बेटा, कोई इशू? एक और पूछूं? तो दिस इज अ हॉलो राइट सर्कुलर सिलेंडर। ये सेंटर सी है, ये एज सपोज ई है, दोनों के बीच में एक मिड पॉइंट है एम, एक्सेस यहां से पास हो। अब तो 2 मिनट में बता देना चाहिए यार। रॉड प्लस रिंग, सो रिंग तो रिंग रहेगा कहीं पे भी हो, तो रिंग वाइज वही आएगा। वेरी गुड आदित्य, हाफ mr²। पर रॉड के हिसाब से मिड वाला फॉर्मूला है 7/48 ml²। याद आया कुछ?
This is the formula. So from the center to the edge, the length is L by 2, and the distance between two parallel axes is H. Therefore, H will be equal to L by 2 minus L by 6. If we take LCM, we will get L by 3. So, according to parallel axis theorem, IO, suppose this is point O, this is C, is equal to IC plus MH square. IC formula for the rod is ML square by 12 plus MH square, H is L by 3. So this is ML square by 12. हाँ ये किया हुआ पहले. So ML square by 9. So we have to take multiply by 3 and 4. That becomes 7 upon 36 ML square. So the formula for IO will be equal to moment of inertia of the rod, cylinder will be equal to IO plus moment of inertia of the ring about the diameter is half mr square. So the answer, final answer is 7 by 36 ml square plus half mr square. And very good. As we know that for a right circular cylinder, solid right circular cylinder, moment of inertia of an axis passing through the center and perpendicular to the radius is IC, and that is similar to the formula of the disk, which is half mr square. Here the axis is passing through center and perpendicular to circular plane. Now suppose if the axis is shifted to the circumference and remains parallel. Now this is a solid right circular cylinder. Axis is shifted from the center to the circumference remaining parallel. So this is a distance between the two axes, which is h, which is nothing but equal to the radius of the circular path, circular face. Now we all know that the formula for IC is half of mr square. We have to find this formula. Suppose this is point IO. So we have to find IO question mark by parallel axis theorem. We can find IO is equal to IC plus MH square. IC is nothing but half mr square plus MH square. What is the value of H? It's nothing but R. So we can take LCM. The formula becomes 3 by 2 mr square. The formula becomes 3 by 2 mr. So this is the formula for the moment of inertia of a particle of a solid cylinder when the axis is passing through the circumference and remains parallel to the center. So we have a formula 3 by 2 mr square. Now, suppose the axis is passing through center and perpendicular to length. So what can you say about the formula? This is the combination of what?
a rod and a disc. This is a combination of a rod and a disc about the diameter. So rod का formula क्या आएगा? 1/12 ml square, and disc का formula about the diameter is half of center. Center disc का formula half है और about diameter 1/4 है. So the formula is 1/4 mr square. कोई doubt? 1/4 mr square. So this is the formula. So it's a combination of two, rod and a disc. पूछूं अभी आगे? चलो इसका बताओ. I formula will be rod plus disc. Rod from the edge 1/3 ml square and disc 1/4 mr square. याद आया? चलो ये बताओ. एज, सेंटर, मिड. बताओ बेटा. So this will be mid वाला 7/48 ml square और 1/4 mr square एडिशन. याद आ गया? तो सिमिलरली एक और ले लेते हैं. याद आया कुछ? L/3 है सपोज. करके दिखाओ. ये तो 1/4 mr square रहेगा. ओनली रॉड का होगा. So solving by parallel access theorem will be 1/9 ml square. So this will be the formula. Moment of inertia of the hollow sphere. So now for hollow sphere, what we do? We draw two circles with negligible thickness. So suppose the thickness is dw, and the radius of the sphere, hollow sphere, is r. So dw is the width of the hollow sphere and width of the hollow sphere. तो आइए देखते हैं. Now suppose for this what we are doing, we are considering a small element with same width dw, elementary mass dw. अब यहां से यहां तक suppose this is an angle theta, so this will be a short angle d theta. तो अगर इस डायग्राम को आप ध्यान से देखें, this is d theta, this is radius r, and this is a width dw. तो width dw ले लिया है. लेंथ ऑफ एन आर्क का फॉर्मूला
लेंथ ऑफ एन आर्क का फॉर्मूला, लेंथ ऑफ एन आर्क का फॉर्मूला आर डीटा। तो यहाँ जो लेंथ ऑफ एन आर्क है वो डी डब्ल्यू हुआ, और आर इज कैपिटल आर, और एंगल थीटा विल बी व्हाट, डी थीटा। तो वृत्त का फॉर्मूला हो गया आर डी। एनी डाउट? आगे चलते हैं। एलिमेंट्री मास, mass of the element, say dm, we have to find, we have to use here lean, here we have to use the concept of areal mass density. As we have surface area of the sphere, so areal mass density, which is denoted by sigma, is always constant. So we can write as a mass upon area is equal to elementary mass upon elementary area. So mass upon area is equal to elementary mass upon elementary area. So what is the mass of the sphere? M, area of the sphere, 4 pi r square. Mass, elementary mass of the this cutting section is dm. अब इसका एरिया ढूंढना है। अगर हमने एक छोटा सा टुकड़ा कट किया है तो ये टुकड़ा जो होगा बेटा, दिस विल बी एक्चुअली ऑन द एंटायर सरफेस। सो वो एक छोटा सा क्या नजर आएगा हमें, रिंग नजर आएगा। सपोज हमारे पास एक बॉल है, हॉलो हॉलो स्फीयर, और हमने उसकी एक स्लाइस कट की तो हमें एक रिंग दिखेगा। तो रिंग होता है जो एलिमेंट्री मास आ जाएगा, रिंग। अब ये रिंग का एरिया कैसे ढूंढेंगे? तो अगर हम रिंग का एरिया ढूंढने जाएंगे तो अगर हम इसे कट करें, सपोज ये जो रिंग है, अगर मैं यहाँ से कट करूंगा तो वो एक स्ट्रिप बन जाएगी, और वो जो स्ट्रिप है उस स्ट्रिप का एरिया आएगा लेंथ इनटू ब्रेथ। अब ये जो लेंथ है वो एक्चुअली इसका सरकमफ्रेंस है, दैट इज 2 पाई। तो हमें इसका रेडियस चाहिए। सपोज इसका रेडियस जो है वो है x। क्या रेडियस है? सो दैट इज 2 पाई x। और ये जो थिकनेस है वो थिकनेस क्या है हमारी? dw। थिकनेस क्या है? dw। वापस से रिपीट कर रहा हूँ, हमने जो एक छोटा सा सेक्शन लिया है, एक रिंग बनी है, उसका एक रेडियस होगा x। तो उस रिंग का सरकमफ्रेंस विल बी 2 पाई x, एंड द थिकनेस जो हमने ली हुई है दैट इज dw। तो इफ वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ द स्ट्रिप, दैट मींस एरिया ऑफ द रिंग, area of the strip is area of the elementary mass, area of the elementary mass, which is dA, that will be length into breadth। length का मतलब 2 pi x, breadth का मतलब dw। कोई डाउट? अब ये वैल्यू यहाँ डालेंगे तो we will have 2 pi x dx dw, 2 pi x dw। अब इसे कंटिन्यू करेंगे तो we will have dm will be equal to, ये ऊपर जाएगा 2 pi m x dw upon 4 pi r square। एनी डाउट? अब ध्यान से देखिए बेटा, पाई और पाई कैंसिल हो गया, 2 1 जा 2 2 जा। सो दिस इज हाफ कैपिटल M x dw अपॉन r स्क्वायर। अब ध्यान से देखो बेटा, हाफ m अपॉन r स्क्वायर x। नाउ यू सी हियर, सपोज दिस इज सेंटर C,
दिस इज पॉइंट ओ, सेंटर ऑफ द रिंग। तो अगर आप ध्यान से देखिए, ओ है, ये सी है, तो दिस बिकम्स अ राइट एंगल ट्राइंगल। ये आर हो गया, ये एक्स हो गया। इफ दिस इज एंगल थीटा देन दिस विल बी आल्सो एंगल थीटा। तो यहाँ पे cos थीटा का फॉर्मूला क्या आएगा? एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो थीटा का एडजेसेंट साइड इज एक्स अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या है बेटा? आर। So cos theta is equal to x upon r. Therefore, x is equal to capital R cos theta. Any doubt? बहुत गुगली है बेटा। So x की जगह पे आएगा capital R cos theta into dw. Therefore, dm is equal to half m, कुछ कैंसिल हो रहा है? Yes, r और r स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो बचा अपॉन r cos theta dw। अब बेटा dw की वैल्यू, dw is equal to yes r d theta। Therefore, dm is equal to half m क्या आएगा बेटा? हाफ एम, आर आर कैंसिल, बचा क्या? कॉस थीटा डी थीटा। यस, वेरी गुड। यहां तक कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। पक्का? अच्छा, रिपीट करो। ठीक है। तो डीएम की वैल्यू क्या है बेटा? इट इज इक्वल टू हाफ एम कॉस थीटा डी थीटा। नाउ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एलिमेंट्री मास विल बी डी आई। सो डी आई का फॉर्मूला होता है एम आर स्क्वायर। एम की जगह पे आएगा डीएम, और आर स्क्वायर की जगह पे क्या आएगा हमारे पास? वो टुकड़े का रेडियस क्या है? एक्स। तो आएगा, इसलिए आएगा डीएम एक्स स्क्वायर। कोई डाउट बेटा? इट विल बी एम इंटू आर स्क्वायर। वो जो एलिमेंट्री रिंग है हमारे पास, उसका जो रेडियस है वो एक्स है, क्योंकि हम इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ढूंढ रहे हैं ना। और वो रिंग है, अगर वो रिंग है तो रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर होता है, इसलिए एम आर स्क्वायर लिया गया। अब आगे चलते हैं। इफ यू हैव टू फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एंटायर hollow sphere, so that will be I, which is the integration of di, that means integration of dm x square. So we have to find, substitute the value of m and x. So integration of dm की वैल्यू अभी हमने ढूंढी। ये ऊपर वाली क्या आएगी? हाफ m cos theta d theta। दिस इज द वैल्यू ऑफ dm x स्क्वायर। x की वैल्यू अभी हम लोगों ने ढूंढी थी, तो वैल्यू ऑफ x वाज r cos theta द होल स्क्वायर। कोई इशू बेटा? r cos theta the whole square. So this will be represented as half m r square cos theta. Cos square theta becomes cos cube theta d theta. Any doubt? तो हाफ जो है वो बाहर आ जाएगा, m r square कांस्टेंट है, बाहर आएगा इंटीग्रेशन ऑफ cos cube theta d theta। cos cube theta d theta। अब ध्यान से देखना है, इसकी रेंज आएगी ना विथ रिस्पेक्ट टू क्या आएगी? थीटा। विथ रिस्पेक्ट टू क्या आएगी? थीटा। So if we consider the hollow sphere, तो बेटा इसकी रेंज चलेगी नीचे से लेके ऊपर तक।
सो नीचे हमारे पास वैल्यू आती है π/2 माइनस और ऊपर वैल्यू आती है प्लस π/2। कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं इसमें। तो देयरफॉर हमारे पास जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है उसका फॉर्मूला आएगा I इज इक्वल टू हाफ mr² इंटीग्रेशन ऑफ माइनस π/2 टू प्लस π/2 cos क्यूब थीटा डी थीटा। अब बेटा यहाँ पे जो चैलेंजिंग पार्ट है वो है इंटीग्रेशन ऑफ cos क्यूब थीटा क्या आता है। तो दिस इज एक्चुअली अ पार्ट ऑफ मैथमेटिक्स, cos क्यूब थीटा। तो जब आप इंटीग्रेशन सीखेंगे पूरा, नहीं साइन थीटा नहीं आता बेटा शिवम, दैट इज फॉर cos थीटा माइनस साइन थीटा। ये cos क्यूब है, तो वी हैव टू सब्स्टिट्यूट द फॉर्मूला फॉर cos 3 थीटा, देन वी हैव टू फाइंड द इंटीग्रेशन, देन वी हैव टू फाइंड द रेंज। रेंज सब्स्टिट्यूट करने के बाद, सॉल्व करने के बाद हमें लास्ट में कुछ कुछ होता है। वो कुछ क्या होता है तो हमें सॉल्व करके मिलेगा। यहाँ पे आएगा हाफ mr², हाफ mr² है। तो इसे सॉल्व करने के बाद हमें कुछ वैल्यू मिलेगी और वो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद हमें मिलेगा 2/3 mr²। क्या आएगा? 2/3 mr²। अगर आप इसे सॉल्व करोगे द वैल्यू विल बी 4/3। कैंसिलेशन करने के बाद 2/3 mr² है मोमेंट ऑफ। so moment of inertia of hollow sphere is 2/3 mr²। एक बार आप इसे देख लो, फिर चाहिए तो दोबारा देख लो। क्या सॉल्व करूं बेटा महालक्ष्मी? 4/3 कैसे आया? इंटीग्रेट करके आया बेटा। अभिषेक क्या क्या वापिस से देखना है? मुझे मालूम है यहाँ तक सबको समझ में आया है। उसके बाद ये कहाँ से आया वही क्वेश्चन है ना? अच्छा ठीक है, फिर अभी मुझसे तुम लोग इंटीग्रेशन करवाओगे मतलब है? शर्म नहीं आती? फिजिक्स के टीचर को बोलोगे मैथ सॉल्व करो। चलो ठीक है, करते हैं। एक कॉपी तो करो पहले। नहीं नहीं, मैं कराता हूँ, कोई इशू नहीं है। आती है मुझे थोड़ी बहुत मैथ्स। पहले वाला पेज भी चाहिए? अच्छा अच्छा। So now we have to discuss moment of inertia of solid sphere. As this sphere is not a hollow, it is dense. So we have to consider mass per unit volume, that is denoted by rho, which is called as mass density, for this derivation to find elementary mass dm. तो आइए स्टार्ट करते हैं। वी कंसिडर sphere, solid sphere at a distance of x. We have considered a small part dx. अब ये dx का एक टुकड़ा करेंगे तो हमें एक रिंग नहीं मिलेगा। वी विल गेट अ हॉलो स्फीयर। टुकड़ा निकालेंगे तो एक हॉलो स्फीयर मिलेगा। तो दैट्स व्हाई मास, elementary mass dm upon volume elementary dv will be equal to बड़ा m upon बड़ा v. Now dm will be equal to m upon volume of the solid sphere. We have 4/3
pi बड़ा r cube, बड़ा r is the radius of the sphere, into dv. अब ये dv ढूंढना, फर्स्ट चैलेंज। हॉलो स्फीयर है, तो हॉलो स्फीयर है तो एक होगा सरफेस एरिया इंटू थिकनेस, या तो आप ये बोल सकते हो आउटर वॉल्यूम माइनस इनर वॉल्यूम, या आप डीवी के लिए बोल सकते हो सरफेस एरिया इंटू थिकनेस यानी कि dx। तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला 4 पाई एक्स स्क्वायर, क्योंकि रेडियस x है, इंटू dx। तो ये dv का फॉर्मूला आ गया। अब ये dv सब्स्टिट्यूट करेंगे बेटा, क्या मिलेगा? dm will be equal to m upon 4 pi r cube into dv is 4 pi x square dx। therefore dm is equal to, बेटा कुछ कैंसिल हो रहा है? यस, 4 और 4 कैंसिल, और कुछ कैंसिल है? पाई और पाई कैंसिल, बहुत बढ़िया। सो व्हाट रिमेन्स, यहाँ बच गया m अपॉन r क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर dx, और बचा है अपॉन 3 था ना, 4 अपॉन 3, तो ये 3 ऊपर जाएगा। तो हमारे पास जो रिलेशन आ गया, dm इज इक्वल टू 3m अपॉन r क्यूब एक्स स्क्वायर dx। एनी डाउट? So we get the relation of dm. Now we have to find the moment of inertia of the elementary mass. So moment of inertia of element is di, और ये जो di है, अगर आप देखोगे तो ये hollow sphere, di जो है that is nothing but an hollow sphere. So di's formula will be the formula for hollow sphere. That means it will be 2 by 3 mr square, as similar to the hollow sphere. This is moment of inertia of hollow sphere. अब बेटा मास की जगह पे क्या आएगा? dm, और r की जगह पे क्या आएगा? yes, x आएगा। so we have dm into x. any doubt? so let us continue. so therefore moment of inertia di will be equal to 2 upon 3 dm. value of dm is what? value of dm is what? 3m upon r cube into x square dx into x square. So we have di is equal to 3 और 3 cancel हो गया, so we have 2m upon r cube x square into x square will become what? x raised to 4 dx. any doubt? so here we get the formula for moment of inertia of the elementary mass di, पर हमें di नहीं चाहिए, हमें तो पूरा solid sphere चाहिए। तो moment of inertia of the solid sphere I is equal to integration of di. So integration of 2m upon r cube x raised to 4 dx। और इसकी रेंज कहां से कहां होगी? x की, x की रेंज यहां से शुरू होगी, मतलब 0 से, और एंड जाएगा कहां तक? r तक, यानी रेंज आएगा 0 to r। so the lower limit will be 0 and the upper limit will be r. so when we substitute that, lower limit will be 0 and the upper limit will be r, so this will be 0 to r. now what is common? 2m upon r cube is constant, we get integration of x raised to 4 dx. range is from 0 to r,
Now we all know that as per the formula, basic definition of moment integration, basic definition of integration says that integration of x raised to n dx is equal to x raised to n plus 1 upon n plus 1. So we have to substitute this value. X raised to 4 ka integration will be what? X raised to 5 by 5. So we have a formula. I will be equal to 2m upon r cube. This will be x raised to 5 by 5. Range will be 0 to r. अब बेटा 5 बाहर आ गया. So we have 2 upon 5 m upon r cube. First we have to find the upper limit. We have to substitute upper limit. Instead of x we have to write r. So we have r raised to 5. Then we have to substitute a lower limit which is 0. That will be 0 raised to 5, nothing but 0. Therefore i's formula will be 2 upon 5 m upon r cube into r raised to 5. कुछ कैंसिल होगा बेटा? r cube और r square कैंसिल हो जाएगा. r cube कैंसिल होगा. We have 2 upon 5 mr square. Very good बेटा. 2 upon 5 mr square. So this will be our final formula for moment of inertia of the solid sphere when the axis is passing through the center. मतलब हम इस स्फीयर को कैसे घुमा रहे हैं? इस तरीके से. और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है I. द फॉर्मूला इज 2/3 mr स्क्वायर. अभी तक हमने वेरिएशन नहीं देखी है दोनों की. आपको गो थ्रू करना बेटा एक बार. गो थ्रू कर लो बेटा. So this is moment of inertia. Moment of inertia of hollow cone. Of hollow cone. Now suppose I have considered a cone. Hollow है इसलिए डबल बना रहा हूं. The radius of this cone is capital R and the height of this cone is capital H. तो सेम चीज मैं यहां बना रहा हूं. This is R, this is H. अब क्या कर रहे हैं? At a distance of x हम एक छोटा सा सेक्शन ले रहे हैं dx का. तो दिस विल बी द एलिमेंट्री मास एंड इसका रेडियस है r. एक रिंग के जैसा. इसका रेडियस है r. तो ये जो रेडियस r है मैं यहां बना देता हूं r. और यहां से यहां तक का डिस्टेंस है x. और ये पूरी लेंथ जो होगी दैट विल बी द स्लैंट हाइट l. हमने ज्योमेट्री में पढ़ा. तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो सिमिलैरिटीज के हिसाब से यू कैन राइट दिस एज r अपॉन बड़ा R इज इक्वल टू x अपॉन बड़ा L. और यू कैन राइट एज r इज इक्वल टू r अपॉन L इंटू x. ये काम आएगा हमें आगे. अब हम बात करेंगे एलिमेंट्री मास की. एलिमेंट्री मास dm. सो एलिमेंट्री मास dm के लिए मास अपॉन एरिया. सो अगेन हम बात करेंगे सिग्मा इज कांस्टेंट. दैट मींस मास पर यूनिट एरिया.
So mass of the elementary part is dm. अब उसका एरिया बताना बेटा. तो अगर मैं इसको कट करूंगा फिर से उसे खोलूंगा तो एक स्ट्रिप बनेगी और उस स्ट्रिप का लेंथ होगा सरकमफ्रेंस 2 पाई r और थिकनेस होगी dx. थिकनेस होगी dx. dx will be the thickness. It will be a ring. So यहाँ entire mass of the cone is m and the surface area of the cone is pi r l. शायद आपको याद हो. Yes or no? अब कुछ कैंसिल हो रहा है. पाई और पाई कैंसिल. So we have therefore dm is equal to 2 ऊपर गया 2 into m. नीचे क्या आएगा r into l और ये ऊपर जाएगा छोटा r into dx. अब छोटे r की वैल्यू क्या बेटा बड़ा r अपॉन छोटा बड़ा r अपॉन l into x. So we can substitute here. That implies 2m upon rl into छोटे r की वैल्यू डालेंगे बेटा r upon l into x. So we have dx. अब क्या कैंसिल हो रहा है r cancel. So this will be equal to 2m upon l square x dx. कोई डाउट बेटा. Second step, moment of inertia of elementary mass di is actually moment of inertia of ring. क्योंकि टुकड़ा जो है वो एक रिंग है और मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिंग का फॉर्मूला एम आर स्क्वायर है. तो इसलिए डी आई इज इक्वल टू एम. एम की जगह पे क्या आएगा बेटा डी एम आर स्क्वायर. अब बेटा इसकी आर की वैल्यू क्या होगी इसका रिंग का रेडियस क्या है छोटा. सो दैट विल बी इक्वल टू छोटा आर. दैट इंप्लाइज डीएम की वैल्यू 2m upon l square into x dx. This is the value of dm r square. अब बेटा r की वैल्यू ऊपर देखो तो वी कैन सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ r आल्सो. तो r की वैल्यू आएगी r अपॉन l इंटू एक्स द होल. कुछ कैंसिल हो रहा है बेटा कुछ कैंसिल हो रहा है नहीं हो रहा है. तो सॉल्व करेंगे. therefore di will be equal to very good 2m upon l square into l square becomes l raised to 4 and x का square into x becomes x cube और r का square becomes r square into बचा क्या dx. अब हमें चाहिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द एंटायर कोन will be integration of di और I is in terms of x और x की रेंज जो है वो स्टार्ट कहां से होगी कहां तक होगी बेटा x ये है इट विल स्टार्ट फ्रॉम 0 और टोटल लेंथ जो है वो है l. so the range will be from 0 to l. so if it is 0 to l तो हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे बेटा इंटीग्रेशन ऑफ 0 to l. di की वैल्यू बेटा सब्स्टिट्यूट की जाएगी. तो di की वैल्यू क्या है 2m r square upon l raised to 4 into x cube dx. अब बेटा इसमें जो जो कांस्टेंट है वो बाहर आएगा. therefore I is equal to 2 constant m constant radius of the cone constant length l raised to 4 constant. बाकी बचा इंटीग्रेशन ऑफ 0 to l x cube dx. अब बेटा x cube का इंटीग्रेशन x raised to 4 by 4. एक्सीलेंट.
तो बेटा यहाँ सब्स्टिट्यूट होगा, दिस विल बी 2m r square upon l raised to 4, this will be x raised to 4 by 4, the range will be 0 to L. Now if we have to substitute one upper limit, then lower limit, so we will have therefore I is equal to 2m r square upon l raised to 4, upper limit will be l raised to 4 by 4, lower limit will be 0. What is cancelling? What cancels out? 2 and 2 get cancelled out. So we can cancel 2 and here it will be 2. L raised to 4, L raised to 4 cancel. Wow. तो क्या बच गया? Half mr square. Now this half mr square, you can recall this is a formula of some shape passing through the center. Yes, it's a formula of a disk. Similar to the formula of disk. Same चीज last time के हिसाब से. Suppose if I have a hollow cone और मैं उसे ऊपर और नीचे से ऐसे स्क्वीज कर दूं या मैं उसके बहुत सारे टुकड़े करूं, तो हर टुकड़ा सर्कल के अंदर सर्कल आ जाएगा और सब कंबाइन होने के बाद एक डिस्क बन जाएगा. So moment of inertia of the cone from the center is similar to moment of inertia of a disk from the center. Any problem? Okay. Now there is one more important concept which we have to study, which is law of conservation of angular momentum. Law of conservation of angular momentum, which is denoted by L. So law of conservation of angular momentum, what it says, if external torque, acting on a body, if external torque acting on a body, if external torque acting on a body is zero, if external torque acting on a body is zero, then angular momentum is constant. If external torque acting on a body is zero, then angular momentum is constant. That means torque external is zero if torque external is zero, then L is constant. अब मुझे बताओ बेटा, if external torque is zero, then L is constant. आगे चलते हैं. तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे L से. L is equal to R cross P, which is called as
moment of linear momentum, L is equal to R क्रॉस B. शायद आपको याद हो A क्रॉस B is equal to AB sin theta. So R क्रॉस P will be equal to RP sin theta. ये वाला पार्ट हमने पहले पढ़ा, पर इसमें ये चीज अप्लाई नहीं करनी. बच्चे क्या करते हैं, इसको सॉल्व कर देते हैं और सब गड़बड़ कर देते हैं. So here what we have to consider, we have to not consider this. हमें करना क्या है, L से कैसे सॉल्व करें. ये वाला पैटर्न नहीं यूज करना है. बच्चे प्रीवियस पैटर्न यूज करते हैं और सॉल्व करते हैं और रॉन्ग आता है. ये ऐसा नहीं है. ये लिख के छोड़ा मैंने जानबूझ के, आपको याद रहेगा ये नहीं करना है, इसलिए लिख के कैंसिल. अब ध्यान से देखिए, L कांस्टेंट है और कोई भी चीज अगर कांस्टेंट होगी तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा, dl अपॉन dt. डेरिवेटिव विल बी व्हाट, जीरो. अगर L कांस्टेंट है तो डेरिवेटिव जीरो है, इसलिए हमें इसको डिफरेंशिएट कर. सो dl अपॉन dt विल बी, बेटा यहाँ पे आएगा d बाई डी टी ऑफ r क्रॉस p. अब r क्रॉस p है बेटा u इंटू वी. आपको पता है, अब ये पूरा मैथमेटिक्स लेना पड़ रहा है मजबूरी में. इफ y is equal to u into v, then dy by dx will be equal to u derivative of v plus v derivative of u. याद आया कुछ? So we have to apply this. We get u derivative of v plus v derivative of u. कोई डाउट बेटा? ये वेक्टर फॉर्म है, आप वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते. So therefore dl upon dt will be equal to r cross, बेटा rate of change of linear momentum. dp upon dt मतलब change in momentum with respect to time, which is called as rate of change of linear momentum. आपको मालूम है रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या होता है? फोर्स. therefore dp upon dt will be equal to force, यानी यहाँ पे आएगा F. कोई डाउट? नाउ प्लस p मोमेंटम. अब मुझे एक बात बताओ, मोमेंटम इज व्हाट, मास इनटू वेलोसिटी. सो दिस विल बी इक्वल टू m इनटू v. ये सब्स्टिट्यूट करेंगे बेटा, क्या आएगा, मोमेंटम इज इक्वल टू m इनटू v क्रॉस dr by dt. dr by dt, r is length, displacement upon time is velocity v. So dr upon dt is v. ध्यान से समझना, displacement upon time is v. So we have to substitute here. We get v. Therefore dl upon dt is equal to r cross f. What is r cross f? r cross f क्या है, टॉर्क टाउ. तो ये आएगा टॉर्क टाउ प्लस m इंटू वी क्रॉस वी. मुझे बताओ बेटा v क्रॉस v विल क्या क्या होगा, v क्रॉस v will be equal to v into साइन ऑफ एंगल बिटवीन v एंड v. a क्रॉस b का फॉर्मूला ab sin थीटा. अब बेटा v और v के बीच में एंगल क्या होगा, जीरो. v का v से ही एंगल जीरो होगा. व्हाट इज साइन जीरो, साइन जीरो इज इक्वल टू जीरो. वेरी गुड. एनीथिंग मल्टीप्लाई बाय जीरो बिकम्स जीरो. तो इसीलिए v क्रॉस v बिकम्स जीरो. m into zero will become zero. Therefore you can say dl upon dt is tau, that means torque. अब बेटा कंडीशन क्या है,
कंडीशन इज एक्सटर्नल टॉर्क, ये एक्सटर्नल है क्योंकि ये फोर्स भी एक्सटर्नल है, तो एक्सटर्नल टॉर्क इज जीरो। अगर एक्सटर्नल टॉर्क जीरो है, therefore dl upon dt will be equal to what? जीरो। और किसका डेरिवेटिव जीरो होता है? ओनली कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो होता है। इसका मतलब therefore L is what? Constant. So this is called as law of conservation of angular momentum. Law of conservation of angular momentum. Any doubt, beta? So now we are going to find radius of gyration. Gyration means rotating body. Now if I consider a rigid body of any shape with negligible thickness rotating about an axis point O with moment of inertia I. Now if I consider a point C which is the center of mass of the body, and if this body is rotated, the center of mass will move in a circular path of some radius. That radius is denoted by K, and this K is called as radius of gyration. So for any shape, we consider moment of inertia's formula as I is equal to mr square. Every body has its own center of mass. So the radial perpendicular distance of the center of mass from the axis of rotation is denoted by radius of gyration. So the formula becomes I is equal to mk square, which we consider as the Sarvajanik formula for every shape. So mathematically, k square will be equal to I by m, or you can say k is equal to root of I by m. So k is the radius, hence its unit is meter, and its dimensions will be equal to L1 only. If you have to consider m, it will become 0. If you consider t, it becomes 0. This is called as radius of gyration with a Sarvajanik formula of k is equal to root of I by m, or moment of inertia I will be equal to mk square. Any doubt? ठीक है बेटा, moment of inertia of a hollow sphere is 2/3 mr square when the axis is passing through the center. अगर एक्सेस शिफ्ट हो जाती है at the tangent, then moment of inertia at tangent will be 1 plus c. तो कांस्टेंट 2/3 है, तो 1 plus 2/3 will become 5/3 mr square, or you can use the formula for parallel axis. Similarly for moment of inertia of solids, solid sphere जो हमने किया, about the center क्या फॉर्मूला था? About the center फॉर्मूला क्या था? It was 2/5 mr square. About the center IC, अगर टेंजेंट होगा तो again plus 1, so again 1 plus c, that will be 1 plus 2/5, so that will be 7/5 mr square. समझ आया? So moment of inertia of the solid sphere, उसके दो फॉर्मूले बन गए, एक सेंटर के लिए और एक आई एट टेंजेंट के लिए. फिर हमने क्या पढ़ा? कोन. थर्ड पढ़ा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द कोन, हॉलो कोन. मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ हॉलो कोन
क्या फॉर्मूला था? हाफ mr² which was similar to the disk. So moment of inertia of the hollow cone which was similar to the disk. आपके लिए मैं एक होमवर्क दे रहा हूं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड कोन। देखूंगा आप कर सकोगे कि नहीं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सॉलिड कोन, एम्प्टी छोड़ रहा हूं, देखना चाहूंगा दिमाग है क्या, है क्या। नेक्स्ट हमने पढ़ा लॉ ऑफ, यस ट्राई करना बहुत जरूरी है, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, that means dl upon dt is torque external which is 0, then L is constant, then L is constant. So this is law of conservation of angular momentum. And sixth topic जो हमने पढ़ा that is radius of gyration. नेक्स्ट लेक्चर कोई गलती से भी छुट्टी ना करे बेटा, गलती से भी गायब नहीं होना, नहीं तो पूरा चैप्टर वेस्ट हो जाएगा उसका। नेक्स्ट लेक्चर तो रेडियस ऑफ gyration का फॉर्मूला रूट ऑफ I by m and सार्वजनिक फॉर्मूला फॉर I will be equal to m k square. नेक्स्ट लेक्चर कोई छुट्टी नहीं करेगा। Now if r at center is 0, anything multiplied by 0 becomes what? 0. So when we are applying a force at the center, then torque is 0. If torque is 0, that means ability to rotate is also 0. Ability to rotate is 0, torque is 0, मतलब वो rotate हो ही नहीं सकता। यानी इस केस में रोटेशनल मोशन इल्ले। तो इसका मतलब ये है कि आपको अगर किसी चीज को रोटेट करना है, आपको टॉर्क चाहिए, टॉर्क चाहिए तो आपको आर चाहिए। इसका मतलब आपको सेंटर से थोड़ा दूर जाना पड़ेगा। अगर मैं यहां से अप्लाई करता हूं फोर्स, तो यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो आर है। तो सपोज दिस इज एफ सी, दिस इज पॉइंट ए, दिस इज एफ एट पॉइंट ए। नाउ आर एट पॉइंट ए इज नॉट जीरो, so when we apply torque at point A, that will be R at A in which is not zero. So when torque is not zero, it has ability, तभी रोटेट होगा। इस केस में रोटेट नहीं हो रहा है, इस केस में रोटेट। तो अगर मुझे अच्छी से रोटेट करना तो आई हैव टू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ आर। तो अगर मैं ए की जगह पे यहां आ जाऊं बी पे, तो टॉर्क एट बी विल बी आर एट बी इंटू एफ, एंड आर रेडियस इज मैक्सिमम एट बी, that means torque will be maximum at B. तो इसका मतलब टॉर्क इज नॉट जीरो, रोटेट होगा। यानी इस केस में वो बहुत अच्छी कैपेसिटी से रोटेट होगा। तो हमें रोटेट करना तो वी हैव टू अप्लाई अ फोर्स एट पॉइंट बी। अब देखो बेटा, फोर्स मैंने ऐसे अप्लाई किया, नाउ दिस इज पॉइंट सी, मैंने फोर्स बी पे अप्लाई किया ऐसे, तो बेटा ये गोल ऐसे घूमेगा क्लॉकवाइज। अगर मैं सेंटर से नीचे अप्लाई करता,
So when we apply force below C, सपोज यहाँ पे पॉइंट है या थोड़ा सा और यहाँ पे ऊपर D, तो व्हेन आई अप्लाई अ फोर्स हियर, तो बेटा ये ऐसे घूमेगा, यानी अगर सेंटर के ऊपर से फोर्स अप्लाई करूंगा तो ये आगे जाएगा, और अगर सेंटर के नीचे से फोर्स अप्लाई करूंगा तो ये पीछे आएगा गोल। तो इसीलिए जब किसी बॉल को, किसी इंसान को आगे लेके जाना है तो वो सेंटर के ऊपर अप्लाई करता है, नीचे तो जितना ऊपर आप अप्लाई करोगे उतनी तरीके से ये आगे जाएगा। ये है रोटेशन। अब इमेजिन करो कि यहाँ पे एक दीवार है, आप यहां से धक्का मार रहे हो तो रोटेट होना चाहता है, लेकिन ये आगे नहीं जा सकता है क्योंकि यहाँ पे क्या है, वॉल है। अगर वॉल है तो ये बॉल आगे नहीं जाएगा, ये गोल तो घूमेगा। इट विल शो ओनली रोटेशनल मोशन। जैसे एग्जांपल, आपने एक कार को ब्रेक मारी हुई है और आप रेस दे रहे हो, तो जब आपने ब्रेक मार के रखी हुई है और आप रेस दे रहे हो तो टायर रोटेट तो होगा लेकिन आगे नहीं जाएगा। तो दिस इज प्योर रोटेशनल मोशन वेयर देयर इज नो लीनियर मोशन। अब यहाँ पे जब आपने फोर्स अप्लाई किया है एट द सेंटर, तो एबिलिटी टू रोटेट जीरो है, लेकिन ये डिस्प्लेस होके आगे जाएगा तो बॉल स्किड होगा। यहां से यहां तो आ जाएगा लेकिन रोटेट नहीं होगा। तो इट विल शो लीनियर मोशन बट नो रोटेशन इफ द फोर्स इज अप्लाइड एट द सेंटर। फंडा क्लियर हो गया? नाउ सपोज ऑन द सरफेस कोई आगे दीवार नहीं है एंड वी आर अप्लाइंग अ फोर्स नॉट एट द सेंटर, तो ये पॉइंट जो है वो गोल भी घूमना चाहेगा। जब ये गोल घूमेगा तो ये लुढ़क के आगे जाएगा, तो ये बॉल यहां से यहां आ जाएगा। तो आप देखो ये गोल भी घूमा, रोटेट भी हुआ, एंड द सेंटर शिफ्ट फ्रॉम ए टू बी अ न्यू पोजीशन, यानी उसने ट्रांसलेशनल मोशन भी दिखाया। तो रोटेशनल भी दिखा रहा है, ट्रांसलेशनल भी दिखा रहा है, यानी ये लुढ़क रहा है, और उस लुढ़कने को हम बोलते हैं रोलिंग। तो रोलिंग इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशन। तो एक चीज क्लियर हो गई कि अगर किसी चीज को सेंटर से फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, सेंटर पे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो वो सिर्फ ट्रांसलेशनल दिखाएगा, और सेंटर से अवे अप्लाई कर रहे हैं तो उसकी रोटेट होने की एबिलिटी भी बढ़ जाएगी, यानी प्लस रोटेशनल भी दिखाएगा। यानी दीज टू कंबाइंस टू फॉर्म रोलिंग। बड़ा इंटरेस्टिंग है ये, पढ़ाने जाऊं तो इसके आगे और बहुत कुछ ले सकता हूं। नीचे से अप्लाई कैसे करेगा बेटा तू अभिषेक? मतलब इस पॉइंट पे यहां से अभिषेक यू आर अप्लाइंग एट द सेंटर फ्रॉम हेयर, नहीं यहाँ पे
पूरा पेज दिखाऊं? हाँ अभिषेक, अभिषेक का सर ऑडियो ऑन कर पाएंगे? So this is the graph of the rolling motion. Now what we are going to derive is the kinetic energy of rolling body. Kinetic energy of a rolling body. Now suppose there is a body which is rolling. That means the surface is showing the rotational motion and the center is showing the translational motion. The combination is called as rolling motion. So the kinetic energy of the rolling body will be equal to kinetic energy of the translational body, translational motion, plus kinetic energy of the rotational motion. So translational energy for kinetic energy for translation is half mv square and rotation is half I omega square. Now this is half mv square plus half I. Moment of inertia, Sarvajanic formula is mk square, where k is radius of gyration. Omega is equal to v by r, as we have a relation of linear velocity v is equal to r omega. Previously we have studied this. Now what is common? Half is common, m is common, v square is common. What is left is 1 plus k square by r square. So this is the formula for kinetic energy of a rolling body. We have an inclined plane. There is a body whose initial velocity is 0. It is released from the top with an height h. Theta is the angle of inclination and s is the distance covered by the body. So according to kinematical equations, v square is equal to u square plus 2as. Initial velocity is 0. Therefore, v square is equal to 2as. V square is equal to 2as. Any doubt? Now further. Now this is rolling down. So it has some kinetic energy for rolling. And we all know that energy can neither be created nor be destroyed. So it has to be converted from one form to the another. अब जब ये इस height पे था, so it has some energy that is called as potential energy. And potential energy का formula है mgh. That means this potential energy is converted into energy of rolling body. So according to law of conservation of energy, potential energy mgh is equal to kinetic energy half mv square 1 plus k square by r square. इसमें m और m कैंसल हो गया. Therefore gh, अगर ये 2 ऊपर जाएगा तो 2gh is equal to v square into 1 plus k square by r square. Now we have a relation here. जो चाहिए वो ढूंढ सकते, जो चाहिए. Now suppose if you want v velocity, तो बेटा v square will be equal to 2gh upon 1 plus k square by r square.
v square. So v will be equal to square root of 2gh upon 1 plus k square by r square. Suppose we want acceleration. तो v square की वैल्यू 2as है. अगर मैं यहाँ v square की जगह पे 2as डाल दूं तो I will have 2gh is equal to 2as और जो ये वाला पार्ट है वो नीचे आएगा 1 plus k square by r square. अब बेटा 2 and 2 get cancelled. So acceleration can be written as gh upon s into 1 plus k square by r square. So हमारे पास acceleration का भी फॉर्मूला बन. सपोज सामने वाला कहता है थीटा ढूंढो. अब बेटा थीटा के सामने क्या है? h. So h is the which side? Opposite side. So h can be written as s into sin theta. तो अगर मैं h की जगह पे s sin theta डाल दूं तो मेरे पास क्या चीज बन जाएगी? a will be equal to g into h की जगह पे आएगा s into sin theta divided by s into 1 plus k square by r square. कुछ कैंसिल हो रहा है बेटा इसमें? s और s कैंसिल. So a will be equal to g sin theta upon 1 plus k square by r square. तो इस तरीके से हम एक्सेलरेशन का रिलेशन थीटा में भी ढूंढ सकते हैं. एक्चुअली हमारे काम की चीज यही है. अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी. बाकी सब मैथमेटिक्स. समझ आ रहा है बेटा? So this is the derivation for kinetic energy of rolling body without slipping. Slip नहीं हो रही है, roll हो रही है. So this is an inclined plane. Length is s. Height is h. There is a body which is released from the top of the inclination. Therefore, the initial velocity is 0 meter per second as it is released. V is the final velocity. S is the distance covered या path length. H is the height of inclination. Theta is the angle of inclination. Now here you can write as sin theta is equal to opposite side upon hypotenuse. Opposite side is h upon hypotenuse is s. You can use kinematical equation. Number 3, v square is equal to u square plus 2as. So v square is equal to u square, initial velocity is 0, 2as, where a is acceleration. Therefore, v square can be written as 2as. Any doubt here?
अब आगे चलते हैं बेटा। पोटेंशियल एनर्जी, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी इज mgh. Kinetic energy maximum is equal to kinetic energy of a rolling body, which is equal to half mv square 1 plus k square by r square. Any doubt? Now, according to law of conservation of energy, energy can neither be created nor be destroyed. It has to be transferred from one form to the another, and total amount of energy in the isolated system always remains constant. So you can say जितनी loss energy यहाँ से होगी उतनी gain kinetic energy होगी. So you can say loss of potential energy is equal to gain in kinetic energy. So maximum potential energy is what? mgh. Maximum kinetic energy is half mv square 1 plus k square by r square. तो ये हमारा जो फॉर्मूला है रिलेशन, इसको यूज करके हम सब कुछ ढूंढ सकते हैं. So this is the most important. अब इसमें कैंसिल क्या क्या हो रहा है? m और m कैंसिल हो गए. बाकी आपको क्या ढूंढना है? Suppose a person says find the velocity. फाइनल वेलोसिटी जहां यहां पहुंच के उसकी बनी है. सो हमारे एक्सप्रेशन से फ्रॉम 5 यू कैन से ये 2 ऊपर चला जाएगा. सो 2gh इज इक्वल टू v स्क्वायर, और जो ये ब्रैकेट है वो नीचे आ जाएगा 1 प्लस k स्क्वायर बाय r स्क्वायर. देयरफॉर वेलोसिटी v विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2gh अपॉन 1 प्लस k स्क्वायर बाय r स्क्वायर. तो हमने वेलोसिटी ढूंढ ली. अब सपोज वो वेलोसिटी नहीं बोलता है, वो बोलता है कुछ और फाइंड करो, जैसे कि हाइट. अगर आपको हाइट चाहिए तो आप h को यहीं रखो, g नीचे लेके जाओ, हाइट बन जाती है. वो क्या है? एक्सेलरेशन. सो फ्रॉम 2 हम क्या फाइंड कर रहे हैं? एक्सेलरेशन क्वेश्चन. सो फ्रॉम 2 you can write as v square is equal to 2as. So instead of v square you can write as 2as is equal to 2gh upon 1 plus k square by r square. कुछ कैंसिल होता है? यस, 2 और 2 कैंसिल हो गया. क्या बच गया? a is equal to gh upon s into 1 plus k square by r square. So acceleration का relation. We can substitute sin theta also. Sin theta is h upon s. तो यहां सब्स्टिट्यूट करेंगे. फ्रॉम 1 a is equal to g sin theta upon 1 plus k square by r square. So ये एक्सेलरेशन का फॉर्मूला. आपको थीटा चाहिए, आप थीटा ढूंढ सकते हो. साइन थीटा को यहीं रखो, बाकी सबको उधर ले जाओ. तो जो चाहिए वो ढूंढ सकते हैं आप. कोई इश्यू? फॉर एंट्रेंस नोट करने वाली बात ये है
k square by r square, आप देखिए k square by r square, k square by r square. Whenever we talk about rotation or rolling, whenever we talk about rotation or rolling, we have to consider k square by r square. अब ये k square by r square क्या है बेटा? बड़ा आसान, बड़ा इंटरेस्टिंग चीज. फॉर एन एग्जांपल, हम बात करते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड स्फीयर. Moment of inertia of solid sphere, I about the center is 2 by 5 mr square. 2 by 5 mr square. Seventeenth question of the textbook. A pendulum consists of massless string of length 20 centimeter and a thin bob of mass 100 gram is suspended on the conical pendulum. If the bob now performs 75 rotations per minute, calculate kinetic energy and increasing gravitational potential of the potential energy of the bob. Given pi square is equal to 10. So, according to the data, what we have, the concept is of what? Conical pendulum. The concept is of conical pendulum. So when we talk about conical pendulum, this is the diagram. This is R, this is H, this is L, this is angle theta. So according to the data, length of the string is 20 centimeter. Mass of the bob is 100 gram. The frequency is 75 rotations per minute. If we convert into second, divide by 60 हो जाएगा. So 15 5s are 15 4s are rotations per second. This is the frequency. Frequency से हमें ओमेगा मिल सकता है. आगे बोल रहा है काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी है. We have to find kinetic energy, question mark. We have to find potential energy, question mark. कोई डाउट बेटा? So kinetic energy question mark and potential energy question mark. तो आइए बेटा इसको सॉल्व करते हैं. तो सबसे पहले डेटा गिवन क्या है? L is fundamental, M is fundamental. So when we have to solve, we have to check N. N is derived. और N का एक फॉर्मूला अगर आपको याद हो, कोई बताएगा मुझे. It is 1/2 pi root of something by something. So it is G upon L cos theta. So frequency is given as pi by 4. 1/2 pi root of G का वैल्यू. अगर आप क्वेश्चन को पढ़ो तो G की वैल्यू, G पाई स्क्वायर की वैल्यू 10 है और पाई स्क्वायर की वैल्यू 10 है. सो G की वैल्यू आएगी 10 अपॉन L की वैल्यू 20 सेंटीमीटर. सो 20 अपॉन 100 ऊपर चला जाएगा इनटू वी हैव कॉस थीटा. सो ये 0 और ये 0 कैंसिल. So we have 5 upon 4, 1 upon 2 pi, 100 का square root आएगा 10. What we have is square root of 2 cos theta. Squaring both the sides, we have
25/16 is equal to 100/4 pi square रूट हट जाएगा, बचेगा 2 cos थीटा। सॉल्व करेंगे बेटा, 4 1 जा 4, 25 जा 25 और 25 कैंसिल, ये ऊपर जाएगा, ये वहां आएगा, इट विल बी 2 cos थीटा is equal to 16/pi square. This is 2 1 जा 2 8 जा, therefore cos theta is equal to 8/pi square is 10, which is equal to 0.8. तो cos theta की वैल्यू 0.8 मिली। So in the conical pendulum diagram, this is R, this is H, this is L, this is theta. We had found cos theta is equal to 0.8. If cos theta is equal to 0.8, then cos theta is adjacent upon hypotenuse L is equal to 0.8. So we can write as H is equal to L into 0.8. H is equal to L की value 20 centimeter, मतलब 20/100 meter into 0.8. So H will be equal to 0.16. H मिल गया, L है, R ढूंढ सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम, R is equal to square root of L square minus H square. So we have L की value है 20 centimeter, मतलब 20/100 is 0.2 square minus 0.16 square. So this will be equal to square root of 0.04 minus 0.0256. So when we solve, we get 0.0144. So that is nothing but 0.12 meter. So we have R is equal to 0.12 meter. Any doubt? What we required is the kinetic energy. For kinetic energy, we required velocity square. So velocity का formula आपके पास है root of rg tan theta. So that will be equal to square root of r is 0.12, g is 10, and tan theta is opposite upon adjacent. So theta's opposite side is r, adjacent is h. So r 0.12, h 0.16. So we can solve this. This is root of 2 decimal गया, 2 decimal गया, यहाँ आएगा 1.2 into 12/16. 4 3s are 4 4s are. So this is square root of 3.6 divided by 4. Velocity. Now what we require is kinetic energy. So kinetic energy has a formula half mv square. No need of solving this as we require v square. So half mass of the bob is 100 gram given in the question. So 100 gram we have to convert into kg, divide by 1000 into v square, root हट जाएगा, that will be 3.6/4. So 1020 cancel. This will be equal to decimal हटेगा बेटा, that will be 36. 4 2s are 8 into नीचे आएगा 100. So cancellation आएगा 4 2s are 4, 9s are 1s are 4.5s are. So 4.5 divided by 100 will be 0.045 joules. So this is a formula for kinetic energy. Now what we required again is the potential energy. What is the formula for potential energy? mgh. mgh. So this is question mark. आप ये कॉपी कर लीजिए. पेंडुलम जब गोल घूम नहीं रहा था तो वो रेस्ट पे था, तो ये 0 रीडिंग गिनी जाएगी हाइट की. जब ये गोल घुमा तो आहिस्ता आहिस्ता वो हाइट गेन करेगा और वो हाइट होगी सपोज h.
अब ये जो हाइट h है वो यहां से यहां तक है, और ये हाइट ऑफ द कोन है, जो एक्चुअली टोटल लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग होगा। वापिस से देख लो बेटा, बॉब गोल घूम घूम के एक हाइट गेन करेगा, वो हाइट कैपिटल एच, स्मॉल एच इज द हाइट ऑफ द कोन, एंड द टोटल लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज कैपिटल एल। तो उसने हाइट कितनी गेन की, दैट विल बी इक्वल टू एल माइनस एच। अब एल की वैल्यू कितनी है बेटा, एल की वैल्यू कितनी है 0.220 सेंटीमीटर, और एच हमने ढूंढा हुआ है 0.16। एच की वैल्यू ढूंढी ना बेटा 0.16, सो बड़ा एच विल बी 0.04। अब बेटा पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला जो उसने गेन की हाइट के हिसाब से, दैट मींस mgh, mass of the bob is, mass of the bob according to the question is 100 gram, so 100 divided by 1000 will be in kg, g की वैल्यू 10, हाइट की वैल्यू 0.04, 1 2 3 4 5 6 कैंसिल, आंसर आया 0.04 जूल्स। Sphere of death. Now sphere of death is similar to vertical circular motion. अब जब ये ऊपर होगा तो इसकी स्पीड कम होगी, नीचे होगा तो इसकी स्पीड ज्यादा होगी। सपोज यहाँ पे स्पीड v1 है और यहाँ पे स्पीड v2 है। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, पर्सन सेज द वेलोसिटी वेरीज फ्रॉम 6 मीटर पर सेकेंड टू 10 मीटर पर सेकेंड, मैक्सिमम मिनिमम, मिनिमम 6, मैक्सिमम 10। आगे वो कहता है, एक मिनट है बेटा, नाउ वापिस से a vertical circular motion, spherical जो sphere of death है, this is similar to the vertical circular motion. He says the motorcycle varies its velocity from v1 to v2, that is from 6 meter per second to 10 meter per second. He says calculate the diameter of the sphere of death. So we require diameter question mark. So according to law of conservation of energy, total energy at the highest point is equal to total energy at the lowest point. अब बेटा हाईएस्ट पॉइंट पे टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर। अब बेटा हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी दी गई है v1, दैट इज 6 प्लस mgh। हाइट कितनी है बेटा, डायामीटर, लोएस्ट पे हाफ एम वी स्क्वायर, नीचे वेलोसिटी कितनी है बेटा 10, एंड पोटेंशियल एनर्जी एट द लोएस्ट पॉइंट इज व्हाट, 0। सो दिस इज हाफ m into 36 प्लस m, g की वैल्यू 10, d is equal to half m into 100। बेटा m और m कैंसिल, 36 का आधा 18 प्लस 10d is equal to 50, 10d is equal to 32, or in simple words you can say that d is equal to 3.2 meter। कोई डाउट? क्वेश्चन का सेकंड पार्ट क्या कह रहा है बेटा, हाउ मच मिनिमम वैल्यू आर पॉसिबल फॉर द टू स्पीड्स, मतलब मैक्सिमम और मिनिमम। तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन के लिए मिनिमम वेलोसिटी एट द लोएस्ट पॉइंट और हाईएस्ट पॉइंट का जो फॉर्मूला है
that will be root of Rg for the highest and root of Rg for the highest and root of phi Rg for the lowest. So velocity for the highest point will be root of R. Radius diameter का आधा बेटा 3.2 का आधा will be 1.6. G is 10. So this is root of 16. That becomes 4 meter per second. And velocity at the lowest point minimum value will be 5. R is 1.6. G is 10. So this will be equal to root of 50. Sorry, root of 80. And root 80 will be equal to 4 root 5 meter per second. So minimum velocity for both the cases can be 4 meter per second and 4 root 5 meter per second. Illustration number 21. वो बोल रहा है एक डिस्क है this is the center of the disc O. कहता है flywheel used to prepare and initially it was rotating with 100. Initial frequency is 100 rotations per minute. It is in the form of a disc. तो shape क्या है? डिस्क का मास कितना है 10 kg और इसका रेडियस क्या है 0.4 मीटर. अब वो कह रहा है कि एक मास है छोटा m, वो ऊपर से नीचे गिरा और कहीं पे आके चिपक गया एट अ डिस्टेंस ऑफ x. तो जो x है अगर ये डिस्क को रोटेट किया जाएगा तो जो ये x है वो इस पार्टिकल का r हुआ, यानी पार्टिकल का छोटा r जो है वो x हो गया और मास ऑफ द पार्टिकल इज गिवन एज 1.6 kg. So mass छोटा मास इज इक्वल टू 1.6 kg. कहता है जब ये इसके ऊपर गिर गया तो मुझे बताओ इनर्शिया बढ़ गया कि कम हो गया. अगर वजन बढ़ेगा तो इनर्शिया भी बढ़ेगा. इनर्शिया बढ़ गया तो स्पीड कम हो जाएगी. तो वो यही कह रहा है कि इनर्शिया में बदलाव आ गया तो अब उसकी जो नई स्पीड है n2 दैट बिकम्स 80 रोटेशंस पर मिनट. बोलता है कैलकुलेट x. ये x ढूंढना है. अच्छा सवाल है. कॉन्सेप्ट कौन सा है? इनर्शिया बढ़ा तो स्पीड कम हुई. दैट मीन्स I is inversely proportional to omega. Therefore, I omega is constant. याद आया कुछ? This is on the basis of law of conservation of angular momentum. So I omega is constant. Therefore, I1 omega 1 will be equal to I2 omega 2. Therefore, I1 मतलब moment of inertia of the disk omega 1 2 pi n1. I2 moment of inertia of the disk plus moment of inertia of the clay जो गिर गया ओमेगा 2 2 पाई एन 2. किसी को ये स्टेप नहीं समझ आया तो पूछ सकता. कुछ कैंसिल हो रहा है बेटा 2 और 2 कैंसिल पाई और पाई कैंसिल. I for disk
इंटू n1, n1 कितना बेटा, इनिशियल स्पीड कितनी थी 100, id प्लस क्ले का इनर्शिया क्या होगा mr स्क्वायर, क्योंकि वो एक पार्टिकल है। n2 की वैल्यू कितनी है बेटा 80, 0 और 0 कैंसिल हो गया। इन सिंपल वर्ड्स यू कैन से दैट 10 id इज इक्वल टू 8 id प्लस 8 mr स्क्वायर की जगह पे x स्क्वायर आएगा, क्योंकि r ही x है। अब आगे सॉल्व करना बेटा, ये ऊपर जाएगा 2 id is equal to 8 mx square, 2 ones are 2 fours are, therefore x square is equal to moment of inertia of the d upon 4m। बेटा मेरी आदत है, मैं पहले बिना वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व करता हूं और फिर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करता हूं। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द डिस्क का फॉर्मूला क्या होगा, हाफ एम आर स्क्वायर divided by 4 into छोटा m। Now we have to substitute the value and you will get the answer। Substitute करते हैं बेटा इसके अंदर, ये हो जाएगा 1/8, so we have x square is equal to 1/8 capital M capital R square upon small m। 1/8 capital M, mass of the disc 10, radius of the disc 0.4, the whole square upon mass of the clay 1.6। So this is 1/8 into 10 into 4 का स्क्वायर, यानी 4 into 4, तो बेटा अपॉन 10 into अपॉन 10, दिस इज 1.6, 16, तो ये डेसिमल जाएगा तो ऊपर 10 आएगा। कैंसलेशन करेंगे बेटा, 2 0 कैंसल, 4 4 जा 16 कैंसल, बाकी बचा 1/8। अभी 1/8 मिल गया, x स्क्वायर की वैल्यू 1/8, therefore x will be equal to 1/√8। एनी डाउट बेटा, आपको चाहिए आप इसकी वैल्यू आ जाएगी, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय √2, ऊपर आएगा √2, नीचे आएगा √16, so that will be x is equal to √2 की वैल्यू 1.414, 16 का स्क्वायर रूट 4, therefore x will be equal to 0.3535 meter। This is the final answer।